live stream. Cricket. Hit. Join the Tap line. Be part of the future that's here now. No cash, no card. Just tap. Despite the slightly lower temperature this evening, the fans are still rolling in to see the legends in action. Two teams looking strong as well, both coming off the back of a win, so they'll be hoping to see some really exciting cricket. We've always seen a couple of big sixes, just one big six even from Hamilton Mazzacata, some really nice bowling as well. They'll be hoping the excitement continues. So Chaturanga starts his third. Misley and picked up the wicket so far, and that brings up the 50 partnership. A single just pushed out by Puneet. They've looked good, two of them. When you talk about a partnership, you talk about a team, two players who are complementing each other, 50 of 37 at a very good time. Remember, they lost both their wickets at 32. First Masakadze and then Bisht. So they've definitely resurrected. They just need to keep on going now. Ball's just short. I think that's hurt Anirudh Tang, ricocheted in the air off his arm. Funny bone, you just have to shake it off. He likes cutting the ball, doesn't he? He's done that a number of times, and that bounce there, we've seen that on that side of the field as well. Now you've got two chasing the ball. Hello. Chasing the ball, no problem whatsoever. The runs keep on coming for Munawira. Another 4 of this bat. Samir गेमिंग भाई वाह यार हेलो समीर भाई सुबह में लाइव में आऊंगा आज भाई यार सुबह में लाइव आऊंगा भाई प्लीज आना लाइव में ठीक है Slowed up a little bit. And in the end, the ball wins the race. Look good, Munawira. He looked very good. Even last night, even though it was an innings of just 18. भाई समीर भाई लाइक कर देना Who's been in form. There you go again. Looked very straight, and this one will be cut off. Yeah, if you pitch anything up to Munawira, he's going to go at it. He just loves it, doesn't he? Time and again, he's tried taking the ball out to the boundary. And that's probably the lesson for all the bowlers. Don't pitch too high up for him. The batsman who is in form, he's in good touch as well. And it's pretty evident with the way he's playing. Beautifully played, swept away. Fielder doesn't even bother trying to move. 4 off the back end of the over. 12 gone 91 for 2. भाई पल्ला बंद कर दूं Consistently scoring above that 8-run mark. But no massive overs just yet. But actually that's okay because the consistent run scoring, they're going over 7.5 at the moment. And these two look in really fine form. Munawira especially, 35 from his 27. But Puneet, that beautiful looking sweep shot, gets right down to it. Close out the 12th over. You know, the best part about it, Georgie, is that they played risk-free cricket. Not at any time has it looked like they've tried doing something out of the ordinary. It's just plain and simple. Good cricket, good judgment, good shot selection.
they continue again. Tisara starts his second over, just 5 runs from his first, so tidy. They're just trying to dry up that run scoring and then force them to try and play a few riskier shots, get the run rate back up. You know, if I'm captain Asghar Afghan, I'd probably give another over to Anureet or Rashid just to break the partnership. Wait, it's absolutely dispatched. That goes all the way for a maximum. Completely covered the length that time to Sara Pereira. And in the kind of form that Munawira is, that is a dolly. कमरुद्दीन भाई That is a gift. हाय He wasn't going to कमरुद्दीन leave it. दादा Just the right kind of connection, the निशान proper भाई connection. हाँ आपका हॉटस्पॉट पकड़ाया हूँ भाई मैं First 6 of the innings for Munawira. लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया हूँ थैंक यू सो मच सब बेजार हो सोने गुड नाइट ब्रदर Good running, putting the pressure on the fielder. मतलब से Like we were saying, if I was Asghar Afghan, I'd probably get in Rashid or Anureet. Just give them a 1 over. Forget about what's going to happen towards the back end of the innings. Just get them taking that partnership. Because as things stand right now, it just seems a bit too easy for both the batsmen. They know what's coming at them. Every choice I've made shows I'm in control. What I do, where I go, it's all up to me. Ready, ma'am? Always in drive. Your journey begins with your choice. Jot gets under it, straight enough. Fielder, a bit of football. Anureet, he might not be bowling, but he's playing football as the 100 comes up for the Superstars. Yeah, I think Manchester United is calling. There you go. Again, good timing, good shot selection again from both of them. They've looked so good out there in the middle. Anureet Singh doing his best to stop the 4 runs. The runs have been coming quick and fast. Last 30 deliveries, 46 runs. They've been scoring a boundary every 2-3 deliveries. Short, helped on its way, and it's going to be another, turning into an expensive over now. Already 13 from it, and still one to come. Yeah, this hasn't been the best example of control from a bowler. You'd have to say this over for Sara Pereira, especially if your hind leg is up. You can't afford to bowl so slow and so short. Another gift to the batsman. No credit to Puneet now. He's moving to 28 of 18, striking at 155. He's got 4 boundaries as well. So complimenting Munawira perfectly. They'll keep the strike for the beginning of the next over. 13 gone, 105 for 2. Biggest over of the match so far, 14 runs coming from it, finding the boundary twice, one of them on the full as well. So the run rate now up over 8 again. Munawira into the 40s, Puneet at the other end, striking nicely for a strike rate 152. He's 29 from 19, and this is also the biggest partnership in the tournament so far, 73 from 48. The Superstars only played their first game yesterday, and they're showing just how strong their batting lineup is already. I'm still waiting when Asghar Afghan is going to take that ball. Farman's coming in for his 3rd over. Need to do something different. These two are looking set. They're looking very good. And the way they're going right now, if you end up scoring 170 plus, it's so difficult. We've not seen it happen at all. On current evidence, no one's even been able to chase down 150. So if you get 170, it becomes so difficult. Back over his head, couldn't be straighter. And 4 more to the total. They're loving it. They're absolutely loving it. Munawira's loving it. He's not complaining. Another dolly being given by Farman. You pitch it off there.
This man is going to make you pay. He's in that kind of form. You keep it too slow, you keep it low, he's going to cut you. That's the rhythm you see with Munavira when he's out there in the middle. Beautiful placement, plays it so late. That's the sign of a man in form, and he brings up his 50 with back-to-back boundaries. 50 coming up in just 32 deliveries. Yeah, we just said it at the last delivery. This time he went a little shorter. Didn't have to do anything. Played it as late as possible. Pierced through the field. And he's been a delight to watch. An absolute treat to watch, Dilshan Munavira. What an addition he's been to the Legends League 4.0. Yesterday scored those 18 runs. He looked very good to get those 18. But today, if Hamilton Masakadze hasn't got the big ones, no problem. Dilshan Munavira is there. 50 now of 32. Good response, right on the toes, dug out. His partnership. Now 83 from just 52. So continue at this rate, get themselves to 168. They've got plenty of wickets in hand as well, so they can almost then start to take more risks and just think, right, it's still batting to come. Yeah, you're going at about 8.31 right now. Either you think of going for 10 and over, 11 and over, do you want to take that risk? Or you say, listen, 8.31 will get us close to about 160, 170, and that's more than enough. And he's got hold of that. That is massive, beautiful looking stroke. 14 gone, 121 for 2. This partnership now 89 from 54, by far and away the biggest partnership of the tournament so far. Playing in their second game, the defending champions Southern Superstars showing exactly why they won that trophy last season and how much they want to keep a hold of it. And look at that, look at the balance, and it just kept climbing, didn't it? For a moment I thought it might have gone straight up in the air. It came flying towards us. Beautiful looking shot. I was talking to their captain and our fellow commentator Rajat Bhatia as well. I said, listen, you guys are looking like title favourites now. You guys have a good mix of experience and players who are still in touch with the game. 2 of them are out there in the middle. You've got an informed batsman in Hamilton Masakadze. You've got good bowlers in Ajit Chandila. Last 16 balls, 39 runs. Wow, what an entrance this has been for the Southern Superstars. 121 for 2. At current rate, you go to 172. At 10 and over, you go to 181. Wow. Chinwari has handed the ball now. Got to try and break this partnership because it's taking the game away. Defies physics and gets it through. And what a partnership this has been. It now moves to 90. These two came together with 2 wickets down. Looked like a little bit of a rebuild was needed, and they just took it on from the off. And one thing that really stands out in this partnership, there is no risk cricket being played over here. There is risk-free cricket. Just a wonderful shot selection, wonderful execution as well, reading the length of the ball perfectly, just choosing the right moment to attack. That's been the quality of this partnership. And as soon as I said that, he did that. But sometimes when it's your day, it just pays off. It's a good effort catching up with that. Just gone through everything. Completely missed it. Was going for the big one again. And I guess the conversation between those two is now probably start getting a few more runs. Start going for 10, 11 and over. Start looking for at least 2, 3 boundaries per over. What's the harm? You still got 8 wickets in hand. Yeah, it's a beautiful shot. Bisects the 2 fielders. Hard enough, flat enough, and
enough to be 4 more. He moves on to 42 of 24. Was short there, was Shinwari, and Puneet Mehra, and the kind of form that he's in, was not going to leave that. Waited for it, and then made sure he got the front. He's not happy with it. His captain is not happy with it at all. They got a very different picture. The Southern Superstars, just their second game of the Legends League, already on course to score the biggest score, team total, in the league this season. So he'd have to go back and do that one again. The last 30 balls, 55 runs coming from it. Yeah, they've just not been giving them anything. Nothing whatsoever. Cut them some slack, guys. They're legends at the end of the day. Cut them a little bit of slack. Just trying to figure out what Asghar can do now. You put out Shinwari, or you try something different to break this partnership. Which your two best bowlers are Anureet Singh and Rishi. Get them on. You need to break this partnership. Else it'll be too late by the time you bring them on. Saw him coming. Well bowled in the end. Got him in all sorts of a tangle. 97 of 60. What a partnership it's been. The second highest partnership before this was from the Southern Superstars. 72 between Masakadza and Munawira. And there you go. One bounce. Misjudged it. Got the 4. That brings up the 100 partnership. 101 from 61. Puneet moves on to 46. 15 overs gone. 133 for 2. By far and away the biggest partnership of the tournament so far. 101 from 61 from Munawira and Puneet. One of them's got a half century to his name, and the other's on 46 now. And it looks like it's good, taking the game away from the Riders. Bringing up the 100 partnership. Just caught in 2 minds out in the field, and he was not happy about it, old Shinwari. Smiles between the two out in the middle. 101 now from 61. With that, we are going to have a change in bowlers. So Anureet Singh is going to come back into the attack to try and break this partnership. Starts with the slower ball. Good work. Smart cricket. This partnership is doing the real damage, especially Munawira. The way he played his innings. Never looked like as if he went for the boundaries. He just placed the ball in those gaps, especially playing very close to the body and waiting for the ball to come. And still playing with authority. Yeah, a little bit of a miscue there, but scampering through easily enough for the single. So Puneet now on strike. He's 46 from 27. Strike rate 170. I think this is a very crucial stage, especially when you have 8 wickets in hand. They should be just thinking to just continue the way they are playing. Try to play with bowler's mind, what he's trying to do the next ball, and just playing according to that. Well bowled, well played. Beautifully played by Puneet, and that's quite a way to bring up your 50. He brings up 50 from just 28 deliveries. Strike rate almost at 180. Gets a pat on the back from
battles out in the middle. Puneet Mehra getting selected very late in this tournament, especially for this team, but using his batting skills and taking full advantage, making the difference. What a way to bring his 50. False start from Anurit Singh. He'll go back and do that one again. Never looked like he was going to bowl that, did he? Just jogging through. Bringing mid-off up and taking fine leg back. I think Anurit might be trying for a slow bouncer against Puneet Mehra. Short third man, point, covers and mid-off. These are the four fielders in the 30-yard circle. Plays nicely. There is protection out in the deep, so just one more to the total. Really trying to slow down the scoring rate, force them to do something so they can break this partnership now. 107 from 65. Royal Riders must be thinking what had gone wrong with this partnership. 65 was 107, doing the real damage. Bowler getting upset from the fielder, bringing him up, going round the wicket. I think he'll go for Yorkers against Monovira. Especially you get to see bowlers doing all this when they don't have any kind of answers. Full toss. Could there be a chance? Yes, there is. Finally, the partnership is broken, and it's Rishi Dhawan who takes the catch. Anurit using his experience and skills. This time a low full toss missed by Monovira. Straight in the hands of Rishi Dhawan, standing on long on. Little disappointed, never got that kind of connection, but made a valuable 53 runs out of 37 balls. It's 139 for 3. So they'll be very pleased they've managed to break this partnership, and now time to talk about it as we're going to have a strategic timeout.
Finally, the third wicket down, but a really strong batting effort from Munawira. The two openers went relatively cheaply by their standards, but then Puneet and Munawira both bringing up their 50s. And Puneet bringing it up with a beautiful looking four at the end, but 7 fours and a 6 along the way. 51 not out from 29 for the Southern Superstars batter. The opportunity to showcase his skills today. That was one of the biggest of the lot. He's still out there, 51 from 29, and they've had to share it around among the bowlers to try and break these partnerships, try and change fortunes. And in the end, it was the opening pacer, Anirudh, who made the difference. So Wakarula Ishak out to the middle, 5 innings and a best of 19. In the air, all the way, huge, flat, hard, 6 to open his account, 16 gone, 145 for 3. The youngsters all in watching the party here at the Indira Gandhi Stadium here in Haldwani. So 145 up after 16 overs, and that is quite some way to open your account. What a way to start his inning, especially when you go in the first ball, you hit a 6. Waqar seems to be in a good touch, and I'm very sure most of his Afghanistani friends, they know what he can do. That's the wicket of Munawira, trying to connect the ball, but still not able to get that kind of connection what he was getting with the previous deliveries. Doesn't quite get a hold of it, and it's good work in the end in the deep. Raghav Dhawan as a substitute fielder. First he went for the catch, but then he decided just to stop the boundary. You get very little time just to make that decision. Right on the toes, scampering through. You can see Puneet, the non-striker, set off like a rat out of a trap on that first run, but it will just be a single. Nice and easy catch for Rishi Dhawan. Especially you always tell the best fielders to stand on long off because you know that most of the catches, especially in the death overs, go there only. Skewed up in the air. Just enough to go over Anirudh. Out on the boundary, 6 more. It brings up the 150 for the Superstars with 3.5 overs still to play with. What a way to get the 150 for his own team. That connection made a lot of difference. I think the moment it hit the bat, Puneet Mehra knew it's going to clear the boundary. Looks to launch this leg side, just finds the bottom edge, and it'll be kept to a single. 9 runs from these 4 deliveries, 2 more balls to go.
third 50 just came from 23 balls. And that 50 is only possible because the first 50 you took time from 43 balls, and after that you accelerated the inning. Well bowled, right on the toes, no hesitation at all, barely even appeal. Plumb as you like, and Ishak puts his bat under his arm and heads off. He's not taking the review. Looked like as if from the non-striker, Puneet Mehra told that you're out. No need to waste the review and time as well. 7, Ishak scored. It's 154 for 4. So Puneet's still there at the other end. He's 59 from 32 as Abhishek Raut comes out to join him. A best of 74 not out and is just 150 in his career. So just over 3 overs to play with. This is what brought him to the middle. Plumb as you like. Didn't even appeal. Didn't even review it even. A muted appeal. Just points straight at the umpire and the finger went up. No hesitation. Thisara went for a Yorker and Waqar Ishak had no clue. New batter, Raut, playing in the gap. They'll go for 2. And finishing it very comfortably. After 17 overs, it's 156 for 4. So continue at this rate, get themselves to a very healthy 183, but they can push on. They've got wickets in hand, they've got a set batter out there in the middle who's found 2 sixes and 7 fours along the way to his 59. So they could very easily get themselves up around that 190 mark if they really go from here. I think they should be aiming around 190 now. It all depends how we take down these ballers, especially Anurid. He's going to be bowling his last over. I think Rishi has got 2. And I'm very sure Thisara is going to bowl the next over from that end. I think that's very important, that instead of just going for a shot every ball, instead of that, you should be just making sure that to minimize those dot balls. Chipped in the air, 2 fielders out in the deep on that side and it bisects both of them. Good thinking by Puneet. Trying to just connect that ball instead of hitting it hard. There's a big gap between deep square leg and deep mid wicket, and placing the ball in that gap is very crucial, and that's what he's been doing. It's worn that. It's going to hurt the bouncer. He can take that pain, especially by hitting the first ball for a boundary. Sometimes you try to put that kind of pressure. Once you
hit a boundary the next ball. Coming very slow from the pitch, Puneet. I think it's very important, especially the short ball, that you have to take an extra bit of time and just wait for the ball to come close to you. Anurit, as an experienced bowler, he knows what to do, especially on these kind of pitches. Pushing deep back to square, finer down to fine leg. Full and right on the toes again. They're happy to just scamper through for a single. That's what they've done so well as well. Not just been about finding the boundaries, they've rotated the strike nicely throughout the innings. First 100-run partnership, and from your team, how do you feel about that one? Well, it's a very responsible inning, especially by Munawira after losing two batters in front of him. He kept on going, and then having a good partnership with Puneet Mehra was key, especially because of the score, what we can see right now. Not connected with this one. Bowler sets himself and he takes it. Anurit again with the wickets. And it's a big one. It's Puneet who's going to have to go. Not able to read that slow one. Anurit, he's a very clever bowler, especially in the death overs. Rolling his wrist, keeping the ball away from Puneet Mehra. Puneet not able to make out what was that. Anurit getting his second wicket. He was a little expensive today, but still getting the crucial man, Puneet. Puneet Mehra scored 63. It's 162 for 5. So Ajit Tandila comes out to the middle. He was the hero with the ball in the previous game, picking up 4 wickets. Now he's got an opportunity with the bat. Right on the toes to start with, but he's off the mark straight away. Well, this is a good thing. Any new batter who's coming in, he's not playing those dot balls and he's rotating the strike. Last wicket of Puneet Mehra, trying to play over covers and completely lost control. Yeah, gets under it. Good bit of aggression. 18 gone, 163 for 5. So 2 overs still to play with. 163 for 5 on the board. That in itself is a very healthy target, but 2 more overs still to play with. Well, I'm sure the batters must be looking for a few big strokes. At the same time, the bowler will be trying best to just save those boundaries. Breaking short third man up, short fine leg, point fielder and a cover fielder. Big swing and a miss. Well, you can see the intent there.
from Chandilo. He's only going to play one way. I think you should be looking only for two things. But let's have a look on these wickets. Most wickets of the season. When we talk about it's 2 matches, 5 wickets. Anurit leading the table. Then Amit Verma, 5 wickets from these 2 games. These 2 bowlers are really valuable for the teams. Right in the block hole. Well bowled. He's frustrated that squirts away for a single. That's the quality of Tisara Pereira, that he can bowl Yorkers at any given point of time. Not that easy, even after retirement, that he's able to bowl those Yorkers on a consistent basis. Again, really well bowled. Not really got an answer for him. This is just the over they needed at the back end of this innings to try and just slow that back end run scoring and take a bit of momentum into their batting innings. Losing that control. Sometimes when you try to play a very hard-hitting stroke, you lose your balance. Misses his length. Will get away with one again, just be another single. I think that's where you should be taking advantage. You know, those loose deliveries, instead of hitting it hard, you should try to have a connection. Sometimes a better connection can give you more rewards. Straight through everything. Well stopped in the end by Phil Mustard behind the stumps too. No boundary so far, 1 more ball to go. Only 3 runs have come so far. This is the stage where they should be thinking to use those skills where you can beat those inside fielders, especially those short third man and point fielder. Beautifully played. We thought we were going to get through an over without a boundary there, but just gets across and gets under it nicely. 19 gone, 170 for 5. One over still to play in this innings. 170 for 5 already on the board. That was really nicely played. Does well to get under it off the last ball of the over. They've been very tidy until that point. So 1 over still to go, and it's going to be Rishi to bowl the final over. Not every shot you need power. Sometimes you have to be just clever enough. Just trying to use the pace of the ball. The last ball, previous over, I think Ajit Chandela should be doing the same thing. He's got that ability to clear boundary, but for that, you need to watch the ball, try to get that kind of connection. It should come at the sweet part of the bat, then only you'll be able to clear it. Clubbed, and again there is a man out there at long off, so it will just be another one to the total. This has been really good death bowling because they look like they could be on for 190 at one point and they've just been dragged back in the last couple of overs. I think that's a very important phase where some teams they restrict runs and some teams they get runs. I think so far Royal Riders are on top, especially when it comes to death overs. Gone. Showed all the stumps, slower ball, swings for the hills, and in the end, it's the death rattle.
Rishi Dhawan bowling that slower one, making sure the ball should land in the stumps, missing it by miles. Umpire wants to have a check at the no ball. If it's a no ball, then he'll be very disappointed, that's for sure. Looks absolutely fine to me. The big red shoes behind the line. Well, umpire checked it and reviewed it, and I think it's a legal delivery, so the batter has to come out. Raut scored 8 runs. It's 171 for 6. Gets under it. Great start for Jangid. He picks up 4. Jangid freeing his arms and getting that kind of connection, even though he wanted to aim towards the deep mid-wicket area, but able to bisect the gap between deep mid-wicket and deep square leg. Getting a boundary is very important right now, and that's what Jangid did. Full toss all along the carpet. 2 fielders just going to watch it go between them. Leaking runs here in this final over. Using his power, especially making a yorker, a low full toss, playing it straight, close to the bowler, finding those gaps with ease. Tries to give it a big swing. There's going to be a run out because Chandila had just set off and he plays with him, and it's a run out off the final ball of the innings. So that means that the Superstars have made 179 for 7 20 overs. That target will be the highest chase needed so far in the tournament, 180 if the Riders are to try and bag themselves a win here. But you'd be very happy with 179, the Superstars, although at a point looked like they could have got more. They were dragged back a little bit. It seems like a very good total. But to be honest, they are just 11 runs short. If you see, they've scored 179. They must have aimed around 190. But you have to satisfy your team at some stage that this total is equally good, especially on this kind of pitch. This total can always give them that kind of tension, how to chase it. Two openers. Relative partnership, but then when Budawira and Puneet came out to the middle, the first 100 partnership we've seen in the tournament so far, they really did the heavy lifting in this Superstars batting lineup. Both bringing up their half centuries. And the bowlers just dragging themselves back into the game at the back end. Now, we've pleased that only 4 extras were bowled, but it has been an expensive innings. 179 put up on the board. When it comes to partnership, with 107 partnership of Punavira and Puneet Mehra. Punavira scored 53 and Puneet got 51 from this partnership. Even Masakata and Bisht, they had a partnership of 32. Bowlers, Anurit got 2. 1 wicket each for Rishi, Chaturanga and Pereira, and 1 wicket for Thisara. Yeah, well, Anurit, he was the pick of the bowlers, dragged things back at the end there. 2 wickets for him from his 4 overs, and we're going to go downstairs and hear from him now. जी अनुरीत सिंह हमारे साथ। अनुरीत, वो एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, तीसरी विकेट की क्या सोच थी जब आप गेंदबाजी के लिए आए?
प्लान बहुत क्लियर था कि लास्ट ओवर्स चलेंगे तो यॉर्कर्स के लिए जाऊंगा और कोशिश यही थी कि एग्जीक्यूट प्रॉपर हो, बट यस अनफॉर्चुनेटली वो मेरे रेडार मतलब आ गया, वो मेरे विकेट जो मेरे को चाहिए था वो विकेट मेरे फेवर में था, तो अच्छे एरियाज में बॉल डाला तो अच्छा हुआ था। गेंदबाजी अच्छी थी, उसके साथ साथ आपकी फील्डिंग भी, एक दो आपने स्टॉप्स किए थे और वो कैच भी लिया था कॉटन बोल्ट, बहुत ही बेहतरीन था। जी बिल्कुल, स्लोअर वन डाला था तो थोड़ा सा टाइम मिल गया बॉल पकड़ने के लिए, तो अच्छा कैच हुआ। और विकेट की अगर बात करें तो कल ज्यादा रन बने थे नहीं, आज 179 रन बने हैं। क्या आपको लगता है चेस कर पाएंगे आप? बिल्कुल, विकेट अच्छा है, स्लो विकेट है, स्लो पाटा विकेट है, तो कह सकते हैं कि विकेट पे अगर टाइम लेंगे, विकेट पे स्टे करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मजा आपकी गेंद। थैंक यू। So that target from their 20 overs for the Royal Riders Punjab to bag themselves a win and continue their winning ways against the defending champions here tonight. They need 180 to win. We're going to head for a short break now, but don't go anywhere because very soon we'll be back with the chase. Vintage Mazakasta. Beautiful looking shot. That's the sign of a man in form. He brings up his 50s. And that's quite a way to bring up your 50s. Welcome back to the K Raza Legends League, match number 7. The Royal Riders Punjab taking on the Southern Superstars here at the Indira Gandhi Stadium in Haldwani.
So defending champions, Southern Superstars, they were in action last night and then in action again tonight. Won the toss, decided to have a bat first. Hamilton Mazakadze captaining tonight, electing to bat. Well, they started relatively quickly, 32 for the first partnership. But then Munawira and Puneet came together, the 100 partnership. And Puneet, who was looking sensational for his half century tonight, they didn't really have an answer for him. 63 from 35, 8 fours and 2 sixes along the way. It didn't really matter whether it was pace, whether it was spin, and he sent it to all parts, not just playing in one way. And that was a lovely touch to bring up the half century. So celebrations for Puneet. So the Southern Superstars, that partnership 107 between Munawira and Puneet was the most important of the knocks. And it's all about whether you can just build around one big partnership in a T20 game. That's exactly what they've had there. It was set up at the top by Mazakadze and fished, but 107 off to 66 from Munawira and Puneet together helped get them up to that 179-7 that could easily have been one man. Dilshan Munawira, the other man to score a half century tonight, part of that century partnership. And they were crucial in tonight's run scoring. The run fest from the Superstars, 179-7. 23 fours and 5 sixes along the way. But it could easily have been higher. They were dragged back at the back end by the bowlers, mainly Anyari, who picked up 2 wickets just to slow things down a little bit. But it was a difficult toil out there in the middle for the Royal Riders Punjab bowlers. The first one that went down, the big wicket, the blaster up from last night, Mazakadze, and then the second one just looking to hoik it leg side, full tosses, so often get wickets. Munawira, he played so well, but just couldn't capitalise on the full toss. And then Waqar on his way as well. The left-hander, he'd also played so well for his half century, well taken, caught bowled in the end. Abhishek Rout looking to launch it into tomorrow. He was clean bowled in the end, and then off the very final ball, Ravi Jangid run out. So that target, 180 from their 20 overs. They need to go at 9 and over. They've got to try and break the back of this chase in the power play with the restrictions in the first 6 overs. Plenty of fans in here again tonight at the Indira Gandhi Stadium here in Haldwani, and they came rolling in this evening. Didn't matter that it was slightly cooler temperatures here tonight. They just want to come and see the cricket, which is always heating up and always hot. So excited to see the legends in action. Young fans, older fans, face paint as always, and a full headset to boot. Plenty of celebrations. The music is pumping. They've been dancing, they've been partying, they've been treated to a run fest so far by the Southern Superstars. 2 half centuries, a 100 partnership, and a target now of the highest in the tournament so far. That target is 180 for the Royal Riders Punjab to bag their second win of the tournament. Remember, every team in this tournament has won a game so far, so they all sit on 2 points, but it's net run rate that separates them in that table at the moment, and it's actually the Southern Superstars who only came to the party last night who are sitting top of the table at the moment. The way they batted tonight, they'll be feeling confident coming into defending this target. 180 is what the Riders need, and those are the 2 men coming out up the top to try and break the back of this chase in the power play. Phil Mustard there has left his batting partner behind. And they love it, enjoying every moment here at the K. Rasa Legends League. So good start required now. They need to reach the 180-run mark. The Royal Riders Punjab against the super outfit of the Southern Superstars. They were brilliant with the bat in hand today again. Let's see how they deliver. Yesterday, Ajit Chandila was brilliant for the team in blue. The team in orange now. The Punjab Royal Riders will Phil Mustard yet to fire the way he generally does. You've seen him in so many leagues. He's just been scoring runs, scoring big. His Colonel. Looks like there are going to be a few changes, but as of now, the openers. Yeah, Mohammad Shahzad wasn't there keeping the wicket, so he's coming.
As the impact player giving company to Phil Mustard. Phil Mustard, the Colonel, the Englishman, as you say, played plenty of leagues still around the world. The last few discussions here, Southern Superstars. 180, that target for the Royal Riders. Yeah, confirmation about the impact player. We've seen him coming in. Mohammad Shahzad comes in. The question is who goes out? Anurjeet Singh, his job's done. And what job? Making the all-important partnership of Puneet Mehra and Dilshan Munawira, picking up those 2 wickets. Brilliant work in the field as well. And when he spoke to him, he said the wicket is amazing. He said this is a Kadak wicket. At least it's perfect, hard surface, good to bat on. Expecting Mohammad Shahzad and Phil Mustard to go big. Phil Mustard, 181 innings, the best of an unbeaten 97. He's got 22 50s to his name and over 4,000 runs. That strike rate, 122. Divesh Patania was spot on last evening, 45 wickets for him in his T20 career and the economy of 7.4. Yet the right areas last evening, making sure that the batters weren't able to score, and then just paved the way for Ajit Chandila to keep on picking up wickets. Big chase up now for the Royal Riders Punjab. 180 required from their allotted 20 overs. Captaining the side tonight, Hamilton Mazakadza. So winning the toss, deciding they would have a bat first. They'll be pleased with their 179. Perhaps felt they left a few runs out there at the back end. Another impact player signal. This is going to be for the Southern Superstars. Oh, Kamran Khan comes in. He'll be live in action in place of Dilshan Munawira. Remember him playing for the Rajasthan Royals under Shane Warne, a prodigy. The Rajasthan Royals. He'll be in action. The left arm fast ball. Edge, sketchy, through the gap, 4 to start it off. First ball, first over, 180 runs to win. Slip, maybe not. This time around, the knot has made sure that Mohammad Shahzad gets off the mark. Not very confidently, but he'll take it. 4 runs to get off the mark. Two men out of the ring, square on the off and onside. This time doesn't get it past. An interesting field placement now. There's a slip, kind of a flying slip. There's a short third as well, making it very obvious the line that Patania is going to stick to, and that's where he has been bowling. Yeah, there we go. The keeper's quite up. Generally, we see the first or second slip, not so behind. So there's a flying slip. There's a short third as well. There's a backward point. So the offside there is completely packed. Tucks them up this time. Now a single to the total will bring Phil Mustard on strike for the first time tonight. Yeah, you also had to look at the field, realizing that there's no point in just standing and delivering him down the track. Hamilton Mazakadza, the captain today in the absence of Rajat Bhatia. Skipper yesterday for the Southern Superstars. What a start for them. A convincing victory. Massive margin, and does the net run rate. Positives of 5 table toppers after the first match that they played.
Let's see if they can continue their momentum. They were brilliant with the bat in hand for sure. So Mustard is off the mark, the left-hander, the left-hand right-hand combination up the top of this Royal Riders batting lineup means the field has to continually move around. He'll want to spend some time there. Played the first match, was kept extremely busy by the bowlers while he was keeping. Missed out on the second match. Today he's back in again. So for a solid foundation for the Royal Riders Punjab, both these openers have to fire. Good bit of work in the field. That's what we noticed so much yesterday about the Southern Superstars side. They were so dynamic in the field. They were really on it. We've seen at times a little lackluster in the field from a few of the other sides, but they were tight, they were on it, they saved runs, and it was really crucial in just putting their foot on the throat of their opposition. Of all the catches, Abhishek Raut in particular, one with the long hair, he was brilliant. And now again, the field. Ajit Chandila was exceptional, the player of the match as well. Kamran Khan comes in today as the impact player. 1 to end the over, 7 gone, 7 for 1 gone, 7 for none. So, end of the first over, 7 runs on the board for the Royal Riders in this chase. And look at that for the top run scorers. Mohammad Shahzad, 3 innings, 95 runs. Then hot on his tail, Kuldeep Hooda, 93 to his name. Hamilton Mazzacadze, he's coming up there. Majority of his runs scored last night. But now it's all about what's happened tonight. The impact player coming into action straight away, Kamran Khan. Yeah, played the franchise cricket, continues to keep playing tennis ball cricket across the country. Yeah, the action, many will remember, he played for Rajasthan in the Indian League under Shane Warne in the first few seasons. Coming from Mumbai, tough background that he's come from. Interesting action, creates an impact as well there. And there we go. The action hasn't changed. Keeps playing tennis ball cricket and professional cricket across the country. It's unusual looking, but it works. I think that's the development in T20 cricket. You can have an unusual action, and it doesn't matter anymore. Yeah, there we go, the release. Perfect there for Kamran Khan. Perfect rhythm. Yeah, the height of the jump has reduced a bit for sure. And then after that release, oh, the extension. Too much width on offer, but again, there is protection out at deep point. Yeah, it's that left leg that sort of comes flying through, doesn't it? He ends up... lands, and then there's the release, and then the left leg is above his head, and he's almost horizontal to the ground. Get some ballet music over that one. One for the social team. Just beats that edge. He's got the smile, hasn't he? Just smiling assassin. Spot on, Kamran Khan in the first over that is bowling. The K Raza LLC, perfect line, perfect legs, beating the Colonel. Phil Mustard having absolute no idea what to do about that one. Fabulous start for Kamran.
Again, can't get it through that infield. So he's gone for just one run so far. He's got one to come in his first over. It's a happy little captain, isn't it? Certainly. Speaking of the start for the Royal Riders Punjab, the required rate at 9.4. This is exactly what the captain must have hoped for, not giving away a lot of runs in the first few overs. Most 11 balls, 68 runs conceded. Just the one from the over. Two gone, 8 for none. Tidy start from the bowlers, just 8 runs coming from the first 2 overs. Shahzad opened his account with a boundary, but since then kept quiet. Phil Mustard yet to get going at the other end. 4. Farhan, Gurudaka, Shinwari, Asghar, Anuri, Rishi Dhawan, Sarab Pereira. For sure. Next to bat was Panemal. Shinwari to come. Steady start. No, it's been a very slow start in the first 2 overs for Punjab. Just 8 runs scored. Required run rate now at 9.5. Disciplined start by the 2 pacers, Patania and Kamran Khan. Just too good. We were saying it'd be so important to break the back of this chase early on inside the power play, but not being given anything to play with. Yeah, looking for the ball in the slot. Nothing on the offer so far from Patania. The Mohammad Shahzad will have to do something that he's been doing for so many years. Just go for the big ones. No point in just waiting for the full delivery. That's not going to happen from Patania. He has to capitalize. Goes long, hasn't got enough of it, and in the end decides not to try and get there. Mazakadza put his skates on early, perhaps lost it in the sky temporarily. Yeah, Shahzad had no option. He had to go big. Wasn't exactly in the slot, backed himself. Just over the fielders there. On the 30-yard, Hamilton Masakadza tried his best. Tucks him up nicely, just scamper through for a single. Well, talking about breaking the back of a chase, it is so important to have your openers come out and fire early on. For Dilshan Munawira today, he looked in really nice form. Some superstars, we've got some batters in form at the moment, all seem to be finding it at the same time. Important for just setting up that innings early on. 3 from 37, not too shabby that. Advances and decides against it. But it wasn't just Munawira, it was Puneet as well, who then said, right, whatever you can do, I can do too. Adding a half century to his name as well tonight, the left-hander. More than mighty. Really classy looking knock. Just played the ball on its merits, and at times given a little bit of luck. Quick hands. And that was one of the best of the lot. Soft touch at times, that was to bring up his half century. Appreciate the dugout. 2 half centuries for the superstars tonight. Again, just be a single. They need a few half centuries as well. The Royal Riders Punjab, Hamilton Masakadza's one on his face. Phil Mustard stealing in singles, struggling currently. 6 balls that he's faced. He scored only 2. Not getting it in the slot. Brilliant execution by Pathan.
Raja and Kamran Khan who says golden over super. Four in this one. We've got no answer for this bowling at the moment. 3 gone, 12 for none. Crowds have been treated to a masterclass with the bat so far from the superstars, and now their opening bowlers are showing them that actually it can belong to the bowlers as well. Basically, the team in blue currently dominating here at the K Raza Legends League. Royal Riders, Punjab opening batters struggling to get going. Picked up, and that is how to get going. Phil Mustard, have some of that. That's exactly where he wanted Phil Mustard. The first 3 overs were disciplined execution from the superstars. This time around, Kamran has the pace on the match, exactly what Phil Mustard wanted. Sweet timing. Over square, a massive one. Big six. Appreciation from Hamilton Masakadza. Now forming a perfect O as he watched that soar over the boundary rope. Kamran must have immediately realized his heard in the line there against someone the quality of Phil Mustard. Cannot do that. And it's a good response from Kamran. He went for just 1 run in his first over, and then the first ball of his second gets dispatched like this. It was full, and it was just picked up so easily by Phil Mustard. Didn't have to power it at all, and that's flown almost over the back fence. It's gone miles. And speaking of Kamran Khan, the second season 2009, Shane Warne made sure that he picks Kamran Khan, looking at him in the nets. And in a match against Kolkata, he defended 6 runs of the final over and then bowled the super over against Chris Gayle and Brendan McCullum, coming only 11 runs. But he's already given away 10 in this over. Second boundary of the over. Straight as he liked from Phil Mustard. Yeah, again, the length there, right up there for Phil Mustard, and that's exactly the kind of deliveries Phil Mustard wanted. He'll be a little upset with himself. He couldn't go over the fielder at mid-on for the big one. Nonetheless, he kept his confidence for sure. And again, a good response from Kamran. It's backed up with a single, so 11 from it so far, 1 still to come. The fourth over, just 2 bowlers, Yunus Bamid and Masakadza still no spinner coming in. The question is it going to be Ajit Chandila now? Not allowed Sensor and Mustard to get settled in. Those 1s and 2s to run a ball so far. Certainly, Masakadza must be thinking of a change. 12 runs from the over, 4 gone, 24 for none.
the Royal Riders 24 for none at this point. Stars at 31 without loss, so not too much of a difference, but they did then start to accelerate, really accelerated. 100 partnership in the middle, setting them up for a hefty score, 179. So 4 overs gone here, 24 on the board. Target 180, and we're going to have a change in bowler and a change in pace. We're going to go spin from Abhishek Jha. 15 matches, economy 5.16, that's very tidy. 3 for 10, his best figures. In comes Sakuja, thinking it is going to be Ajit Chandila. But no, Hamilton must catch up. On ahead with Abhishek Sakuja. Shehzad again. With 13 balls, just scored 10. The kind of inning that he likes to play. Two fielders on the next side, there's a decent wicket and a counter on. Can't get it through, but quick hands from Shahzad. A brilliant fielder there, Abhishek Raut. Picked up those important catches last evening. The bowling of Ajit Chandila, they were really difficult. Steps across very early. He's almost given himself too much room and he couldn't actually reach it in the end. But Sakuja starting with the dots, they're really building the pressure now that requires. We're already in the 5th over. This time goes Ariel up and over the infield with the power play here. So only 2 fielders out and no one out there, and a much needed boundary. Ajit Chandila covers immediately, having a chat with Abhishek Sakuja, saying that's not the leg. Going to bowl to Shehzad with 2 fielders placed on the leg side boundary. Need to toss it up, invite the batter to go big on the leg side. But with the short balls, no fielder outside the 30 on the offside. The shot is on. 4 runs. Great response. Someone like Sakuja, you just can't keep him quiet for very long. Finally broke the shackles to find the boundary. And this delivery just beating the edge. Again, looks to give himself room. He's almost giving himself too much room. He's stepping across, showing it would almost be 6 stops. Looking to pierce the gap. Not able to achieve that, but now there'll be a sudden change in the field. All the fielders here and there. The right hand, left hand combination. Phil Mustard comes on strike. The matchup always with the left arm spinner against Phil Mustard. Is he tossing it up, inviting Phil Mustard to go big? Similar field, 2 fielders on leg side, saving the boundary. Beat the edge. 5 from the over, 5 gone, 29 for none. Well, if we talk about most runs, Mohammad Shehzad right on the top, 2 innings, 104 runs. After that, Kuldeep Hooda, 2 innings, 93 runs. All these legends, they are doing the real damage. Shehzad, 18 balls, 15. He's still trying to find that rhythm. 5 overs gone, 1 more over of the power play. And I'm joined by great gentleman sitting next to me, Azul Patil. Thank you, sir. I've been waiting for this stint all night, mind you, because I'm sitting next to the captain of Southern Superstars, who's going by 100% record in this tournament right now. Played the 1 game, he's won the 1 game. So mind you, this next 4 overs, we're only going to be talking about the superstars and what worked for them, because it's working beautifully for them tonight. Jahangir is the new player in. Bowled well yesterday, and he's been waiting for that shot. He's been waiting for that shot for a long, long time.
Ahmed Shehzad now getting two back-to-back boundaries in two different overs. This one was short and he left on it. Did it really nicely, I think. Jangir bowled little short, taking advantage of that short volley. That's how you should be playing. You should be just waiting for those deliveries and try to make full use of it. I think that's very important, which length you are bowling. Goes a lot fuller. Goes a lot fuller. Shehzad isn't happy with it. He knew he had a few more runs in that. He bowled well yesterday. Rajat, Jahangir, and not just Jahangir. If you see the way Pathania has bowled, Kamran Khan has been a good addition as well. Chandila is yet to come as well. He picked up 4 wickets. It looks like a very solid bowling lineup, and of course 4 overs of Rajat Bhatia as well. You've got an all-round solid team. I've been saying it over and over again. They're looking like title favourites, no doubt about it. Mustard using these shots, especially because the offside field seems to be really packed. Hamilton, he must be thinking about the balls the way you said. Somebody has to replace me as well. Chuck is there. He can even ball the Chinaman. What a shot! Wow! Easy on the eye. Just wonderful to watch. Knew exactly what the ball was bowling. Went up to the pitch of the ball, and then you go boom. Never looked like as if he wanted to go really hard. Just stepped out and just tried for that sweet timing. That's how you normally get the full advantage, especially when it comes regarding connection. Much better, much better. They've gone up for the review. It's a close one. They've gone up for the umpire review. Good stumping. So good keeping behind the stumps. That would keep low. And probably that's an Fox to Mustard. But I think it didn't turn, and I'm very sure that seeing the body language of Puneet Bish, I'm very sure he is looking really confident. By checking the no ball, Dravid seems to be safe here. But let's see about the timing. Seems to be he's gone. He's gone. I think by the time he was about to put his foot down, the bails were off. Well, take your hat off to Puneet Bish, because that is quality. That is absolute quality behind the stumps. The inevitable, the decision, yes, there it is. Called perfectly from the commentary box as well. His foot was up. It was in the crease, but it was not inside the crease. Courtesy of which Puneet Bish has now affected the first wicket for the Southern Superstars. And it's the danger man, Mustard, who was looking so good, that's been sent packing. There's the reaction. And Mustard will now have to take the long walk back to the dugout. Gone for 19 or 15 deliveries. 40 for 1. Good job. The new batsman that's coming in is Sri Lankan batsman Gunathilaka. He's coming because Mustard has been sent packing by Ravi Jahangir. 135 innings, 3,000 runs, more than 3,000 runs, 17 50s, 1 century as well. But he picked up a wicket of Shia Mamla in his first over yesterday, and he's picked up the wicket of Mustard in his first over tonight. Mustard losing his balance, and Puneet was just waiting for that. Getting very important wicket.
especially when the batter was looking really dangerous. Jangid getting the first wicket again. What a shot. Using the full advantage, especially when it's the last ball of the power play. After 6 overs, it's 46 for 1. Comparison of both these teams after 6 overs, the power play, 41 for 2, the Southern Superstars. In reply, the Royal Riders of Punjab have really turned it on in the last 3 overs. They've scored 39 runs in the last 30 balls, in fact. 46 for 1 after 6 overs, and now comes the man who picked up 4 wickets in their first game yesterday. Ajit Chandila picked up a wicket in every over that he bowled last night. It'll be interesting to see. You suppose he's been brought in a little late, or would you have also brought him in the 7th over if you were on the field? Well, I think it's only 1 over which had gone against Southern Superstars. So nothing wrong bringing Ajit Chandela right now. Again, 1 more 6. Previous 6 was the last ball of the previous over, and this one just the start of, after the power play. 50 runs up. Ajit Chandela taking a chance. First ball, flighting the ball. But for that, he has to just keep his length little away. Yeah, it was right in the slot, wasn't it? Emma Shahzad said, "Thank you so much, sir. I've been waiting for that delivery for a long time." Yeah, he went for it again. Now the appeal is there. They're going for the appeal. The conversation is on between bowler and wicketkeeper. There's still some time left. Yeah, he's asking for the review. The captain can take the review. Hamilton Masakadza is now having a conversation. 6 seconds remaining. 5 seconds remaining. Are they taking the review or not? Oh, he's taken it. He's taken it in the dying second of the time allotted in the DRS. And he's finally taken it. And from what we've seen the first time, Rajat, it seems like it's a good decision you've taken it. I think if Shehzad is out, then it's going to be a really setback for Royal Riders. First ball, second ball, Ajit bowled a little slow, kept this ball a little away. Umpire going to check the no ball first, and it seems to be a legal delivery. The only thing where the ball was about to finish, especially because of the umpire's decision giving not out. Oh, that can be very close. That can be very, very close. Never looked like as if it hit the bat. It all depends like where the ball is going to finish. Top of off stump, top of middle stump, or it's going to stay low. You could give credit to Ajit Chandila. For getting hit, he pushed that one really high up. It was a lot fuller, went out for 6 runs. And there you see the skill and the street smartness of the player. He pulled back that length. He foxed him on the flight as well. He forced him to play that same shot again. And any moment now, pitching outside. Pitching outside. And so, the review is lost. There you go, there's confirmation of it. For all the build-up that we did for it, it turned out to be a bit of a damn squib. Well, it's very difficult for the bowler to make out whether it pitched outside or pitched inside, especially from that close margin. Yeah, there's the reply. That's the only way he knows how to reply. I'll jump at you, I'll run at you, but I need to take you for a 4 or 6. That's the only way he plays. I still feel he can just make Shehzad off strike by giving him a single. This is a better length. It's not that easy to play over covers, especially with that kind of length and that kind of pace. Sometimes, these kind of balls, you try to hit over covers and it goes straight in the hands of the bowler. Yeah, this is much better. This is much better. He knows the batsman is trying to line him up. And the experience and the guile of Ajit Chandila is all on display in this over. Went for a 6 in that first ball.
knew that was not the length to bowl to Ahmed Shehzad. Then very nearly got an LBW. It was pitching outside. This is the story. This, of course, was the last ball of the over before this. Mustard it was, or sorry, it was Gunathilaka. Yeah, it went too much to the leg side. You're going to give a gift to the batsman there. Now it's Gunathilaka again on the final delivery of this one to Chandila. Good bowling. It's a good comeback after the first ball getting hit for a six. It's 53 for 1. Yes, the pairing of Ahmed Shehzad and Gunathilaka on the crease. Mustard gone back for 19, Shehzad on 27 of 25, which is a rarity. If anyone has watched Shehzad play throughout his career, generally operates in a strike rate of 200, 250, sometimes 300. Right now he's striking at just over 100. So I'm guessing again he's going to try to go big in this over. Sakuja comes in, replaces Jangir from that end. Yeah, he's done just about enough. He's done just about enough. He'll get the single. But Rajat, it's been a successful power play. How would you term this power play for the bowling side or for the batting side? Well, I think only one over, especially the last over, the power play, but still they were able to get that particular wicket. Getting 70 runs from that over. Actually, because of that, Mustard getting out and then Gunathilaka hitting that from the last ball of that power play. It's very important just to keep things under control. You can easily make out if you keep the ball little away for the batter finds it difficult. And most of the balls, when you don't connect the ball properly, it's going in the hands of the fielder. So you are just stopping the batter to rotate the strike. Sometimes these dot balls actually put a lot of pressure on the batter to just step out and or to try something really silly. Yeah, again he's keeping it neat. Again he's keeping it tidy. Both these players have some big hitting in them. There's no doubt about it. But it's just the quality and discipline bowling of the Southern Superstars bowlers, not just Sakuja. Jangir has come in and done a good job. Yes, he was expensive towards the end. Chandila has come in and do a good job, but Hania had figures of 2 for 10. And that's been the story so far in the chase. Again, they're looking for the run, but the fielder is there. So Shehzad now is on 28 of 27. When have you ever seen Shehzad tied up like this? Only here in Legends League. That's a really positive sign in relation to Southern Superstars. Making things difficult for Shehzad. He's going for a big shot. They're just making sure that they only give single or they just make him try really hard. He's got more than 100 runs in this edition of the Legends League. He's the highest run scorer individually. Current run rate is 7.17. Now your required run rate is reaching to a phase where you don't want it to reach in a T20 game. You don't want your required rate to go to 10, 11 because then it's forcing your batsman to do something they generally don't want to do. Another tidy over, just the 3 runs of it. 8 overs done, 56 for 1. This is coming for you tomorrow. Match number 8, India Captains versus India Tigers. We go live at 7 p.m. First ball is to be bowled at 7:30 p.m. Do join us from this very picturesque stadium in the Indira Gandhi Stadium in Haldwani, which has been the host for the Legends League in this edition.
Chandila coming in for a second over. He's changed ends as well. And in front of him is Mohammad Shehzad. He goes big. He goes big. And I think he's done just about enough. Just need to take confirmation. Was it a one bounce over the boundary or was it direct over the boundary? Shehzad won't be complaining whatsoever. He wants to start an over just like this. Ajit again bowling those balls close to the batter. I think he should just keep the ball away. That's very important. Sometimes you have to just strike the batter. Not able to find that connection. I think umpire is trying to check and he's going to give boundary. Looks like the ball just bounced before the hook. Now, I guess everyone is going to be looking at Chandila's comeback. He has it in him. He definitely has it in him. He did it in the last over as well. Yeah, cut, copy, paste. He's pulled the length. He's made it difficult for the batsman. And it helped that it kept low. Trying to hit towards the mid wicket, but not able to find that connection. But that connection was enough to get that boundary. See, that's what is happening. You get a boundary, then you play a few dot balls. If you see the last over, they got only 3 runs. Because the previous over, there were few runs. Required run rate going over 10 now. 69 balls, 120 required. You need those boundaries. You need to rotate strike. Yeah, again, he was trying to look for the big one. Quality of Chandila, and you said it in our pre-show as well, that he bowls very late. So he sort of understands what the batsman wants to do and then decides what he wants to bowl. And he's a bowler like normally will always go for wickets. If you normally see, with that kind of mentality, you'll always trust your abilities. Well bowled again. Oh, they've gone up. They've gone up to the umpire to check it. You wouldn't bet against Puneet Bisht. He's been looking in good form. But now you can see his body language. It looks like as if he just told the umpire that you should just review it. Bisht is not looking that confident. The only thing umpire is going to see whether his foot was in the air or he was safely inside the crease. Remember, the only wicket so far, that of Mustard, has come courtesy the skill of Puneet Bisht behind the wicket. His leg was inside the crease, but it was not touching inside. There, now this time around, he's done well. Gunath Haliga knew exactly what he had to do. He was beaten by the ball, but his legs are firmly rooted inside the crease. And so any moment now, the not out sign should be coming for you. There it is. There it is. But these are good signs from a keeper's perspective, Rajat, because if your keeper keeps on affecting stumpings like this, you somehow get into the batsman's mind as well. Puneet is a very experienced keeper. I think he played for Delhi for so long. And you can always ask him for advices. When you have a keeper like this, you feel little confident. You feel there is a person standing behind who can always give you a very good advice, a very good team man, and he can understand the game pretty well. It's been another tidy over, a very tidy over. Just the 5 runs coming off it. 9 overs done, 61 for 1, and it's time for a strategic timeout.
Superstars won the toss and they elected to bat first. Puneet Mehra, Munawira, they played such a important inning, both getting half century. Anureed got two, and so far chasing down this total. Royal Riders are 61 for 1. Shehzad looking strong. He's on 34, getting boundaries at regular intervals. 32 balls, 34. Not the normal way, what normally you get to see Shehzad playing, but this time 4 fours and 1 6. He's still on the crease, and that is actually very dangerous for Southern Superstar. Yeah, he's looked a little cramped. He's got that out boundary here and there. But how about that now? Right on top of the Southern Superstars, played 1-1-1, and take a look at that net run rate. Who was the captain in that game? He's sitting with us in the commentary box. At a run rate of 5, and the way they seem to be going, it looks like they're going to be adding to that run rate and also to that points table. Sakuja is coming in for his third over. Yeah, there it is. There it is. There is no point waiting for it. There is no point chasing it because Ahmed Shehzad has been hoping for this one for a long time. And when it comes, it was a thing of beauty. I think Shehzad was desperately looking for a big shot, getting that 6 from the first ball of this over, especially after taking that strategic timeout. There he is again dancing down. Hamilton Masakadza. Don't think they're going to go up to the umpire this time. Yeah, he only has that one way of playing. Either he takes you on the highway or either he falls straight to the highway. Again, sent back by Gunathilaka. And it's been the case now, Rajat. In the last 3-4 overs, first ball, boundary 4 or 6. But after that, they've not been able to get a few runs. So now they need to get these singles and doubles going. See, that's really important. That's what Southern Superstars batters were doing after hitting a boundary. They were making sure that they were not playing those dot balls. I think those dot balls are actually the key, and that's what Southern Superstars will be trying. Even after getting hit for a 6, you have to keep the ball away from batsman arc. First ball hitting a 6, Gunathilaka, 7 balls, 7 runs. Oh, he thinks he's got his man. Puneet Bisht is on point tonight. He definitely thinks he's got his man. If you read the body language there, the referee's gone up. He's not taken any moments, hesitation whatsoever. He's gone up straight away to the umpire. And if he gets this wicket, this will be a thing of beauty. Well, yes, that's what you can expect from Puneet Bisht. Waiting for the batter just to be uncomfortable. Waiting for the batter that he loses his balance. Umpire checking whether it's a legal delivery. Yes, it is. Now he has to check just one thing. Yeah, but this is now where the skill is coming in. As he got him, I think he's on the line. His foot is deeply rooted on that line. And so from here, at first glance, it looks like possibly Gunathilaka survives. But the pressure keeps on getting added on by Puneet Bisht. Or should I say Puneet MS Dhoni Bisht. He's been in that kind of zone tonight. I think umpire is going to have a very closer look. A little bit of two part if it's inside that line. Then he has to give that kind of doubt to the batter. Sometimes umpire takes its time just to be sure about the decision. Every decision seems to be really important, especially these kind of decisions where a batter was looking dangerous. So this is the zoomer version. Well, he's still onto the crease. It's very close. It's very, very close. It's up to the umpire what decision he gives. Doesn't look like as if anything. Oh yes. The crease belongs to the keeper. Whoa. If he pulls this off, because right now from that angle, not this angle, but the angle before us that they showed us, his foot was on the line. And if his foot is on the line, that line belongs to the keeper. Wonderful. That will just be some wonderful skill. What quality it will be.
And I think that decision is coming. I think they've made up their mind. It's taken a while as well, understandably, because it was a tricky one. And any time now, that decision should be coming your way. Whoa! There's the decision. And there's the stumping. Possibly one of the best pieces of fielding in this edition of the Legends League. And it's been done behind the stumps by Puneet Bisht. Take a bow. Both these wickets might have been going in bowler's account, but I'm very sure Puneet Bisht is one of the guys who can always make things possible. And that's what he has done. Without his stumping, I don't out for 7 and 68 for 2. Captain of Punjab comes onto the crease. Asghar Afghan, close to 3,000 runs. 1350s, best of 95 not out. He's got his compatriot and long-time teammate at the other end in Ahmed Shehzad, who's on 41 of 35. Their current run rate is 7, required run rate close to 11 now. But how about this for a piece of skill? How about this for concentration as well? Just the awareness, and then to quickly go out and effect the stumping. That is top-level wicket-keeping by Puneet Bisht. Not every ball is going to turn. Not every ball is going to keep low. Variable bounce is always something what creates a lot of doubt in batter's mind. It's been a very tidy over, a successful over as well. A wicket in it and 8 runs gone from it. 10 overs done, 69 for 2. Look at the worm, a decent start, but then those 2 wickets, they just given an edge to the Southern Superstars. The Royal Riders Punjab still needing 111 runs in the remaining 10 overs, asking rate of 11.1. Only positives for them is Mohammad Shehzad there in company of the captain, Asghar Afghan. Change. The bowling, Asif Mansoori comes in. The left-arm spinner against Asghar Afghan. He's replacing Ajit Chandina. Good thinking by Hamilton, bringing a left-arm spinner against these 2 right-handers. Asif, experienced guy. He can keep things a little difficult for the batter. Making sure that he keeps the ball away. See, that's very important. You just keep the ball away from the batter. Not very short, not just under his arm. Just trying to bowl slow and try to just keep the ball in the right areas. See, this ball turned, but previous 2 balls, it didn't turn. Wow. Light and turn. Asghar Afghan was also surprised. He wasn't expecting that, and nor was the fielder. Batter somehow managed the turn, but fielder somehow got beaten because of that turn after it hit the bat. What is Mohammad Shehzad doing? Where is he looking? The fielders. Yeah, on the offside, there's a sweeper covers and a long off. He's eyeing that gap, or he's just not looking at the fielders and looking to go big. Yeah, flatter, quicker.
This time a little quicker, making things more difficult for Shahzad. Required run rate is going up. Good fielding. Good fielding so far, especially by Abhishek. Yesterday also, you could see him taking few catches, very important catches. 3 catches yesterday, and today also, just waiting for those catches. What a tidy over. Just silence of it to end the 11th, 74 for 2. 11 overs, 74 for 2. The target of 180 runs in the K. Raza Legends League Cricket Season 4. Jangid comes in now. He'll replace Abhishek Sakuja, but Asghar Afghan and Mohammad Shehzad, the strike rate of 100, 150 will not work because the required run rate is at 11.78 now. Ravi Jangid, the only over that he's bowled, he conceded 17 runs, yes, but he also picked up 1 wicket, and that's crucial. However, talk of Puneet, how brilliant has he been as the wicketkeeper? We've seen catches being taken yesterday and today also. It's your catches win you matches, but yes, it's also your wicketkeeper. The way he's been today, those 2 wickets, Mustard and then Gunathalika. I'm very sure Asghar must be looking to step out and hit over long on. He's a confident guy and he is very confident about his footwork. There's some disturbance at the side screen for Asghar Afghan. Played for Afghanistan so many years, so many matches. So there we go. Oh, and it's the ambulance as well. Oh, that light is something that's troubling. Asghar Afghan 74 for 2. 54 balls, 106 runs to win. 9 overs remaining. And there we go. Brilliant stumping work there by Puneet. Bill Mustard thought he was safe for some time, and then it was Gunathalika as well. Tossed up, yes or no? No prevails. Sent back. That's how you increase that pressure. If a batter plays a defensive shot, your point fielder is ready to stop that single. And that's what Puneet is telling. That stay up, not to worry. Comes down the track as predicted by Rajat Bhatia. Asghar Afghan likes to go over long on. He just spoke about it. The invitation was on. Ravi Jangid pulled the length back. Big wicket. Ravi Jangid, he's a very clever guy. He knew Shahzad going to step out. His ball, he lighted the ball, bowled a little slow, turned it. And if you have a keeper like Puneet, you don't have to worry. Asghar not doing the real damage. Getting for 4, 74 for 3. A follow wickets, 44 no loss, and now 74 for 3 at the Royal Riders Punjab. All thanks to the bowlers, but the keeper as well. You don't see that 3 wickets that they have lost, and it's all been the story for Puneet Fish.
turning the ball, keeping it away from Asghar. Asghar stepping out, trying to hit hard, losing his balance, and he knew the moment he missed it, he knew that he has to walk towards dugout. All-round performance. Puneet Bisht. Jangid as well has picked up his second wicket in his second over. In comes the left-hander, the power hitter, Thisara Pereira. Big responsibility on his shoulders. Keeping it far away from him. Steady start, just gets off the mark with a run. I think single, not going to do any damage. That's what they'll be aiming for. Lot of innings, lot of experience. Thisara Pereira, 12 50s, 100. Very valuable guy for any team. Oh, bounce by Puneet Bisht. Nothing is going to trouble him. He knows the pitch very well. The ball's bouncing, the ball staying low down the leg side, way outside the off stump. No bothers for Bisht. See, when your technique is so good, you can always make a difference. And that's what it's all about in relation to the keeper. You can do it really quick. You can wait for the batter to lose his balance. Free stumping. Oh, looking to go over covers. Looking to play with the field. Mohammad Shehzad. This fabulous bowling by Jangid. Good bowling so far. Getting a wicket and just giving 2 runs. Putting that pressure. Every dot ball is going to increase that pressure as well as the required run rate, which is going close to 13 now. Is he keeping it away from Thisara Pereira or just inviting him? Yeah, keeping it away from him. Just 2 runs of that over, 76 for 3. Struggling currently. The superstars at this stage were 91 for 2. Royal Riders are 76 for 3. A little behind the asking rate. It's at 13 runs per over. Thisara Pereira is basically 2 balls, just got off the mark. Mohammad Shehzad has had some big ones, but he is batting at a strike rate of 110. And that's the reason that must be a worried dugout as of now. The Royal Riders Punjab. Big expectations from Mohammad Shehzad. They're currently at 6.3, asking rate at 13 runs per over. 1 or 2 is fine, but consistently in 8 overs to keep scoring at 13 runs per over. If it's possible, you need these 2 batters, and these 2 batters can do it. Mohammad Shehzad and Thisara Pereira. They definitely have the ability of consistently hitting it big. Down the leg side, a rare error from Bisht, and he looks at the bowler saying, no, that's not where you bowl. 5 runs gifted. Giving a wide, especially 5 runs from this ball, is going to upset Puneet Bisht a lot. Mansoori, I think he seems to be under pressure, even though Shehzad hasn't done any kind of damage what we were expecting from Shehzad. Bisht immediately giving that look to Mansoori. Mansoori immediately apologizing. The guy just having a quick chat with him. I think right time to make a comeback. No matter what happens, what's the next is really important. A comeback. Perfect comeback. And this is what Mohammad Shehzad is eyeing now, looking to go over covers. Better ball by Mansoori. I think Shehzad always leaves his crease, and this time not a good connection.
Fielder taking an easy catch. Puneet Mehra, safest fielder in Southern Superstar, and right position for him was long on that time. Shehzad, the real superstar for Royal Riders, is getting out to Mansoori. He had to make a comeback after gifting away 5 runs in the first ball. Mansoori makes a comeback, and you can't keep Puneet out of the match this time around. It was Puneet Mehra, the fielder, at long on. What a comeback. Mansoori has picked up his first, the big man, the danger man. Mohammad Shehzad, that dismissed for 44, 81 for 4 Punjab. Those are some big names in the lineup for the Royal Riders Punjab. Shehzad, Mustard, Gunathalika, Asghar, Thisara Pereira, Rishi Dhawan comes in, but that's how Shehzad was dismissed. I think that flow was not there right from the start. Looked like as if Shehzad was finding it difficult to clear the boundaries, especially making connection was something what started fading away when the pressure was on. Mansoori apologizing for the first ball what he bowled, but making a good comeback. Again, flatter down the leg side. That'll be a white ball. Bist is still having a conversation with him. Rishi Dhawan comes in a strike rate of 121, 1740 runs in his T20 career. Mansoori trying to turn the ball. Yeah. And that's what keeper has been saying, that you don't have to do anything. You just ball in right areas. Chirpy wicket keeper. And doing well as well. Taking those clean collections, asking a question, not very confident. Mansoori on that one. All those dot balls, all those singles required from it now at 13.3. What is it that Rishi Dhawan can do in the company of Thisara Pereira? I'm very sure Thisara wanted the strike because as a left-hander, he can go for few big shots. This is very important, that which bowler you play. As a left-hander, very important that you strike more towards or against left-arm spinners. As a right-hander, you have to aim for the off-spinner. He keeps it on his leg. We'll be expecting something outside the off-stump. 84 for 4 after 13. We're at the Indira Gandhi International Stadium in Haldwani, Uttarakhand for the first few matches of the K Raza Legends League Cricket Season 4. The crowds have turned in big numbers, and that's exactly what we wanted. The intention of LLC being played in Haldwani. We haven't seen a lot of international cricket here. So now they're getting a chance. They're coming in big numbers. Entertainment was guaranteed in the first inning for the Southern Superstars. Those big hits. Oh, the ball just keeping low. Jangid coming in, clean take, completely beating Pereira. Low and slow. Jangid, a very clever guy, making sure that he stays away from Thisara Zak. 24 balls since last boundary came. That's one of the reasons why the pressure is building up. Giving a single is not a problem at all.
for Southern Superstars. Required run rate had gone over 14 now. It's 14.25 and the run rate which is going right now is 6.38. The right hand, left hand combination, a few adjustments in the field. The asking rate at 14.25. No option, Rishi Dhawan. Tisara Pereira, they have to attack and have to make sure that they stay in the crease. There's Puneet Bust standing there. You can only cut the spin if you go onto the pitch of the ball. For that, you need a footwork. But because the ball is turning, not every ball, it gets difficult or batter always stays in doubt. There we go again. As you're mentioning, slow and low, effective bowling. He can think about playing a shot when the ball pitches, and by the time ball comes, he can play another shot. I would say there's nothing wrong to bring the slip in, because sometimes big strokes to get an edge, and there is always a chance of a wicket bowling. Go for the kill. Already a net run rate at 5. We just keep on increasing on that. The big margin victory. Certainly on the offer currently for the Southern Superstars. There's these 2 wickets. Rishi Dhawan, Farman, Samila Shinwari to come. He's eyed that gap on the bounce. Oh, brilliant work, which looked like at first attempt, but Patania eventually it ends up with a 4 after 14.89 for 4. The difference was the phase of consolidation and attacking. 7 to 15 Superstars. 92 runs scored in that phase. Royal Riders struggled 43 and have lost 3 wickets. With the last ball of the previous over, a boundary after almost 4.5 overs. Rishi Dhawan hitting the boundary in the last ball of this over. Patania moving towards right, but the ball came towards left. But still, he tried his best. Not that easy for any fielder if the ball just bounced in front of you. He put his body on the line, wasn't able to pull it back. Ajit Chandila is back. 2 overs, none for 12 so far. Player of the match last evening for the Superstars. Chance dropped. Oh, it was travelling at some pace. Ajit Chandila had the chance. Ajit keeping the ball away from the batter. Tisara Pereira hits the ball really hard. It's not easy for any guy who is a bowler and he has to take these catches. Good bowling by Ajit Chandila. Rajat, you will definitely feel for him. You were in a similar position yesterday. Before that, we'll have a look at this one. Thank God. He's alright. Not like me sitting out today because of the injury. The first ball that Rajat Bhatia bowled yesterday was hit back firmly. Oh, tossing it up, but nothing much that Rishi Dhawan can do about that. Good captaincy by Hamilton, keeping those 2 overs of Ajit Chandila for the later part of this inning. Required run rate had gone over 16, 33 balls, 89 runs required, making things more difficult for Royal Riders. Tossing it up, the call is for 2, but that's not enough. The Royal Riders Punjab, the second one is not possible. Even though it was possible, that wouldn't have been enough.
What are they thinking right now? Rajat, 16.5 the asking rate. I think to hit Ajit Chandela, you need to just step out. If you think like you can play on the back foot, sometimes it gets difficult because you're a tall guy. Some balls just come really quick, and some balls they just come really slow. Full toss. And straight to the fielder. Chance not accepted by Rishi Dhawan. Well, these are the deliveries where a batter can take advantage. A batter like Rishi Dhawan, who's having that kind of ability to clear the boundary. Ajay Chandela, very clever bowler. I'm very sure he knows that this ball is the most important ball of this over because he had given only 4 runs. He's going to go for a wicket by tossing the ball up, or he's going to just keep the ball away from the batter. Keeping it away. There we go. A little far away though. That the white ball, and also the fielders that have been placed, Rajat, the 3 fielders on the offside, indicating that that's where the line is going to be. There you go again, up there. 6 runs of this over after 15. Royal Riders 95 for 4. Their gap is widening, those wiggly worms getting further apart. And despite those wickets falling in the back end of the Superstars innings, the damage was done in the middle overs. But the Royal Riders, they're struggling here. 95 for 4, 5 overs still to play with. Azad picking the batters again, 44 from his 42. But other than that, not too much to write home about. So Kuja starts his 4th and final over for the evening. Or does he? He's got a hold of that. Yeah, hit hard. 1 bounce 4. Punit Bisht was saying, keep it away from him. That's where he's struggling. But the length, exactly there. Yeah, there we go. Easy pickings for Thisara Pereira. Much needed boundary. But again, that won't be enough. They'll keep needing more of them. An immediate change in the personnel. Ajit Chandela being called in the 30-yard. The skipper himself goes back to long on. The equation a little tough though there. Georgie, 29 balls, 81 runs to win. Not mathematically impossible though. This time goes again, goes further. 6, so it's a 4 and a 6. Perfect start to this over. Cross batted straight hit by Thisara Pereira, muscled. Similar error in the bowling now by Abhishek Sarkooja, the last over that is bowling at this stage. However, remember, Superstars were 134 for 2, a little behind. Punjab 105 for 4, but a good start to this over. It was there to be hit. Bit of a drag down. Kuja almost trying to overhit it. Yeah, it's going to hurt. Nice and slow. Listen, turn on that. We'll have a look at that. Thisara Pereira, how did he miss it? Something that he must be thinking. Certainly looking to launch.
tidied up since the first two deliveries of this over went for 4 and a 6. That required rate now pushing up almost to 18. Early call of 2. And they're just putting the pressure on the fielder. That's smart batting as well. Set off for the first one hard. 16 gone, 108 for 4. So Abhishek Rout there, he's been so good in the field. Just had the pressure put on. It allowed them to come back for a second. So 13 from that over. And they're going to have time to have a chat here for the strategic timeout. Yeah, strong batting lineup, that from the superstars, and they demonstrated it today. 179 for 7 from their 20 overs. The Royal Riders, Shahzad again in the batting runs, but other than that, they've really struggled in the chase. They need now 72 from 24. 4 wickets to go down so far. The first one was perfect behind the stumps. Look at that. Just hadn't quite got his foot down, went for the review. And then the big swing, the foot lift, and again, such good work behind the stumps. Just waited that extra millisecond. And again, behind the stumps, it's a hat-trick for the keeper. And this one straight up in the air. And made up good ground to get there. They're 4 down, the Royal Riders. 108 for 4, that required rate now. 18 and over from the last 4 overs. Or as close as they can get to not have too much of an impact on their net run rate. Well bowled. Really well bowled, just pushing it across the left-hander. He's been spot on, Pathania. Very difficult to score against him in the power play. He was the first and the third over, like last evening. Did exactly that today against the likes of Mohammad Shahzad and Phil Mustard. Kept them silent, and now coming the death overs, all he has to do is make sure that it does not give more than 12 or 15 runs and over. Being extremely difficult now for Punjab. He's just trying to go for that full wide Yorker. Slightly missed on the full toss, but it's just going to be another single. The deep backward point placed exactly for that reason.
just pulling it outside the off stump. Those darts, brilliant captaincy from Hamilton Masakadza. Realizing that Thisara Pereira, Rishi Dhawan have no other option but to go big. And at this stage, if you have a bowler who can perfectly execute those outside off Yorkers, he can nail them. Very tough for the batters to score. Really well bowled. Big appeal from behind the stumps, pleading with the umpire. Are they going to go upstairs? Yeah, you thought so by that appeal, surely. And they are going upstairs for the review. The message from Patania and Puneet Bisht was immediately conveyed to Hamilton Masakadza, who's standing at long off. Just indicated to him, yes, you need to take the review. And instantly, without wasting a time, trusting the keeper and the bowler, Hamilton Masakadza. The immediate signal to take the review. Rishi Dhawan, and there we go. That's fine. Not a problem with the no ball, the legal delivery there. And maybe Nick Sen's first. Pitching, impact, wickets, all of that will come later. And that doesn't look to be a problem. The first would be Nick Sen's. The gap between the bat and ball there, if you ask me. And he wasn't confident. The two members in blue, very confident behind the stumps, and the bowler absolutely pleading with the umpire. Still waiting just to find out what Nick Sen's has to say. Building it up. Rishi Dhawan is indicating it's of the inside edge. Oh, just trying to trick the fielders, seeing that it was an inside edge. Tense faces in the dugout for the Royal Riders Punjab. So this wicket would be game-setted match for the Southern Superstars. Rishi Dhawan, not that he's been scoring freely in this match, he's just scored 9 of the 10 balls that he's faced. There's 1-4 as well. There are dot balls that is faced. Patania, the bowler. There we go. Nick Sen's. Is there something that the Nick Sen's has sensed? Yes, it has. Some movement there on Nick Sen's, and that's something that Rishi Dhawan was indicating. An inside edge. So review lost, and that means Superstars do not have any reviews remaining. At this stage, that probably won't worry them too much. The required rate is now 20 per over, and just 3.5 overs still left to play with. Tanya has been economical, just 12 runs from his 2.5 overs so far, so he will have another up his sleeve should he be required. Full toss, dispatched, given the treatment. Poor delivery. That's the first time since last evening and today that Patania has given a juicy full toss. And that too to Thisara Pereira. He'll be disappointed that he didn't dispatch that all the way for a maximum. Just didn't get the elevation. Enough power though. A couple of bounces. 4 runs. Just 6 runs. First 4 balls. Asking rate at 20 runs per over. This won't get through the ring. So it's a good response from Patania. 6 from the over, 1 still to come. Thisara 28 from 18. This partnership, well, they've tried their best to try and rebuild something. 33 from 29, but it's just not the strike rate they needed. Again, full and wide. The throw coming in as well. So single off the final ball, 17 gone, 115 for 4.
needed from the final 3 overs. 4 wickets down. This partnership now 34, trying their level best, but they just haven't been able to get it away. And when there was such a hefty target, the superstars put up 80 being the target. They needed to break it early, and they didn't manage that. Going to give it the best shot, though, down the back end of this innings, falling just short of that rope, but 4 to open the over. Not a good start for Kamran. The second over that he bowled gave away runs against Phil Mustard, the left-hander. And now he starts by conceding a boundary against the left-hander, Thisara Perera, this time around. बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपने मोहम्मद के नाम पर, सरकार का नौकर कोई काम नहीं हो. At deep square leg. There's a deep mid wicket. There's a long on, 3 fielders on the leg side boundary. The right hander Rashid Dhawan, the left arm pacer Kamran Khan. Just looking at the field. Any adjustments required? It doesn't look like Rashid Dhawan just has 1-4 to his name so far. They need plenty more of those. Gives it the big heave. Flat, hard, long 6. Partnership now moves to 45. The cutter from Kamran doesn't work. He was picked up early by Rashid Dhawan. It was flat enough elevation to go all the way. 3 fielders placed there on the leg side boundary. Kamran realizing have to make a better comeback. Full toss. Flat bats it. Gets away with one there because that was not the comeback that you were asking for. Practice was perfect for Rashid Dhawan. Seeing if it just could open the face of the bat or maybe over covers. There we go. That should have been a better option against that one. Just not finding the length. Kamran Khan, second over that he bowled against Phil Mustard, went for some runs. Third over that he's bowling. So far, he's conceded 12. Through everyone. Somehow it's missed the stumps. It's going to go for 4 byes. No, it's not. Oh, excellent bit of work in the field. I was sure that was crossing the rope, and he just came flying out of nowhere. Where was Waqarullah Ishaq? We didn't see him anywhere. But it missed the stumps. It missed Puneet Bisht as well. Wow, how did that happen? Kamran Khan has made sure that he's beaten Thisara Perera and Puneet Bisht. But Waqarullah Ishaq has made sure that he saved 2 runs for his team. Gone. Partnership broken. It won't be a 50 partnership. And Kamran sends Thisara on his way. And that's the comeback from Kamran Khan. Conceded 14 runs, pulls back the length, maybe a little slower as well. Not enough bounce for the liking of Thisara Perera. Hits the off stump. Thisara dismissed. He scored 28. Punjab now 129 for 5. Two overs still to come. 129 for 5 on the board. 51 runs needed. Thisara Perera, this was the end of him. A beautiful delivery after an expensive over. And you can just see the shoulders drop in disbelief. Swung everything at it, and all he had to do was just continue spinning round to watch the bails fly.
looks to launch it out of the ground, and all that happens is his stump flies out of the ground. 2 balls, 2 wickets, clean bowled. The partnership that was 148 was first Tisara Pereira and now Rishi Dhawan. Divesh Patania spot on, hitting the top of the off stump, and that's something he must have practiced for so many years. Rishi Dhawan, dismissed for 17, 129 for 6. Two wickets in 2 balls for the superstars. They're on a team hat-trick here. So now 2 batters out in the middle, yet to face a delivery. This is beautiful. He had to come out swinging. They all have to come out swinging. He was the set batter, 17 from 14. And Patania just too good. Lovely seam position. So his first wicket of the night. So Angelo Pereira comes out to the middle. 111 innings, the best of 74. They're just tip and run to get off the mark. Fielder coming in off the boundary. They're thinking about a second and decide against it wisely. Do they have any firepower to go big, or maybe just looking to make sure that they don't lose all their wickets? Just be there, 1s and 2s. Whose victory just looks out of sight currently for the Royal Riders. Punjab 50 required of 10. Sarul Kanwar comes in, a strike rate of 122. It's 2 half centuries, 548 runs so far in his T20 career. Is there still any firepower for the team Punjab against the superstars? Full toss, again, just a single. 49 needed now from the last 9 deliveries. The superstars smell victory, looking to make it 2-2 after playing just their first game last night, the defending champions. Different case. Yesterday it was chasing, today it was setting, and both times they were sensational with the bat in hand. Right on the back pad, big appeal, yes, finger goes up, and they're going to go straight upstairs. He had to take that chance. Angelo Pereira, 2 reviews remaining. The on-field decision is out. Looked out. Is it going down? Is it off the bat? A couple of questions that will be answered very soon. Having a chat. Yeah, so the first front foot, that looks to be fine. Up next now. Good toss, the ball didn't pitch. Back, oh, is it going down? But before that, as always, I'll have a look whether it was off the inside edge. That makes sense. Again, be involved. Yeah, so on the full toss, so no opportunity for the pitch of the ball. Look at that, you can see it's got a little chilly outside. He's got his jacket on. As the time just ticks over to 11 p.m. here in Haldwani. Looks like the TV umpire decided, right, he doesn't need the Nick sense. Clear gap between bat and the ball. We'll just wait for some confirmation there. Hamilton Masakadza has his eyes glued to the big screen. So does Pereira. 49 required from 9. Just taking those chances, picking up a few more wickets. Just that'll be victory, and again a victory by a big margin for the Southern Superstars. Still waiting on the technology to help assist with this decision, but 49 needed from 9. That's quite some ask.
Southern Superstars have just been dominant throughout both of their games so far, and they've played the last 2 days. They played last night and made quick work of it. So maybe because it was done so quickly, they got home, got a good night's sleep, came out today absolutely firing in the first innings, won the toss, decided they wanted to have a bat first after enjoying batting on it last night. Hamilton Mazzucato said, yep, we'll have some more of that, please. And 179 for 7 they put up in their 20 overs. There was a 100 partnership in the middle that really helped push them up towards the highest total of the tournament so far. There we go. The impact is in line, and wickets is umpire's call. The umpire's call was out. The review will be retained, but they have lost the wicket. There it is. Finger goes up from Patania as well, just in case you didn't see the umpire. And he's going to have to head off. Muted round of applause there from the captain. A slow trudge off. He's already got his jacket on. He goes for 131 for 7. Pinwari comes out to the middle, 152 innings. Gone. He comes. He has a swing and he goes first ball. Patania is absolutely ripping through the tail end here. He's got 3 and he's on a hat-trick. Good chance for the fast bowlers to pick up wickets, isn't it? With the tail enders coming in, asking rate at about 35-40 now. Shinwari going for the big heave on the leg side. Hitting the top of middle and off is Patania. Shinwari dismissed without disturbing the scorers. 131 for 8 Punjab. Hat-trick ball this for Patania. Chaturanga comes out to the middle, 8 wickets down now, and just over an over still to play with the last ball for Patania. So Chaturanga De Silva comes out to face the hat-trick ball. The slip in position. We did see a hat-trick in the last season of the K Raza Legends League, with Kevin Cooper picking up a hat-trick, and then he picked up 4 wickets in 5 balls. Hat-trick ball, slip in position. Big swing, goes aerial. And he'll land safe, so no hat-trick for Patania, but just a single. 19 overs gone, 132 for 8. Final over, 48 runs needed from it.
swing, and off you go. First ball. Patania finishing his 4 overs with 3 for 20. Always nice to just bag a few hits down the back end of an innings. So it's going to be spin for the last over of the game. Chandila to bowl his 4th. He's gone for 18 from his 3 so far, yet to find a wicket. Goes aerial, and just what an effort. If he was a foot taller, perhaps, but in the end, it's a maximum. It's okay, Ajit Chandila is just not happy with that effort, but Kamran Khan did his best. Yeah, he got under it. Maybe, no, nothing much that he could have done there. The last over starts with 4, looks like. There'll be a boundary check. Yeah, that'll be 4 to start with. Completely bamboozled him. Really quick work again behind the stumps. I think we're going to have a review here for the stumping. Happy behind the line there. Third umpire tonight, Lyndon Hannibal. We've seen him on the field a few times already this week, well out of his crease. And he gets his bat round it down. That's the question. Waiting on that final decision, but again, really good work behind the stumps. Not out, so he survives. 4 balls to come in this game. Again, looks to just give it the big heave-ho, more of an agricultural swipe into the leg side. Charging to victory here, the Superstars, to make it 2 from 2, the defending champions. Tidy stuff. Candila just seeing out the final over of the night. Big appeal behind the stumps in particular. Chandila not so convincing. Leg by signals. One to come. 42 runs needed off the final ball. Not even running. Oh, yeah, they are. They decided. So it's 2 wins in a row for the defending champions, the Superstars. They win it by 40 runs. A hugely convincing win for the defending champions. They put 179 for 7 on the board in their 20 overs, and that was always going to be an uphill task for the Royal Riders. They couldn't break the back of the chase early on in the power play. And from there, well, they just trudged along in the end. They put up resistance at times, but it is a 40-run win for the defending champions. They looked so strong coming into the tournament last night, and they've continued that today. And they've done it both way round. Yesterday, it was a successful chase, and today they set a successfully high target that just couldn't be chased down by the Royal Riders. So it's 2 wins now for the Superstars. They've already got a wonderfully heavy net run rate, and now
They have 4 points on the board and they sit very pretty at the top of the table. Captaining the side there today, Hamilton Mazakadze successfully leads his team off the field as they head to shake hands with the Royal Riders, who have been beaten and beaten convincingly here tonight. Chandila bowling the final over, finishing his 4 overs, none for 24. They'll be very happy with their performance, all-round performance. Again, they are explosive in the field and they're really on the money in all areas of their game, the superstars, and they're going to be very difficult to beat if they continue playing like this. Handshakes all around between the two sides and with the umpires out in the middle, but a 40-run victory for the superstars. He was phenomenal behind the stumps as well today, could do no wrong. So Shahzad top scoring 44 from 42, continuing his strong form of the tournament so far. A little bit of resistance from Chisara in the middle order there, but then just ripped through the back end. Patania picking up 3 wickets and 2 of them in 2 balls, meaning that they'll finish 139 for 8 from their 20 overs. So 6 bowlers used, 3 wickets for Patania, 2 for Jangid and 1 apiece for Cameron, Sakuja and Mansouri. So well bowled again, 11 extras in there, so not too tidy, but they won't be too unhappy. They bowled well again off the batting really well tonight. So the superstars making 179 for 7 from their 20 overs. It was always going to be a big ask. Puneet and Munawira were phenomenal, and then in the chase they could just never really get going. The Royal Riders falling short by 40 runs in the end, and we're now going to head downstairs to hear from the losing captain, Ashkar Afghan. रॉयल राइडर्स पंजाब के कप्तान असगर अफगान हमारे साथ है। असगर भाई, गेंदबाजी की अगर बात करें, क्या आपको लगता है ज्यादा रन्स दे दिए आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे पिच थी उसमें कम से कम 180 रन बिग टोटल। ऑनेस्टली हमारी बॉलिंग वैसे न्यू जैसे होनी चाहिए, स्पेशली पुनीत एंड मनवीना जैसे पार्टनरशिप इस विकेट पर बल्लेबाजी के सारा क्रेडिट उन दोनों को जाता है। जो पार्टनरशिप चल रही थी, 100 रन की पार्टनरशिप हो रही थी, तब आप क्या सोच रहे थे? क्या कुछ अलग कर सकते थे आप? हमने ट्राई किया, काफी बॉलर चेंज किए, कुछ थोड़ा मैन चेंज करे, मगर ये इस तरह विकेट जब आप सेट हो जाए, स्पेशली जब आप पहले बैटिंग करते हो, आज जिस तरह शुरू में बल्ले पे बॉल अच्छा रहा था, बाद में थोड़ा पस रहा था, वही सेम। तो उस पे मैं यही बोलूंगा कि दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, सारा मोमेंटम वो ले गए उस टाइम। क्या बैटिंग डिपार्टमेंट में अभी आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक ही मोहम्मद शहजाद लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, और कोई ज्यादा कंपनी उन्हें नहीं दे पा रहा है? ये इस पे हम काम करेंगे, इस पे हम मीटिंग करेंगे, बात करेंगे इस पे, क्योंकि शहजाद शुरू में स्टार्ट अच्छा देते, उसके बाद थोड़ा बैटिंग वैसे नहीं डिसअपॉइंट किया है, थोड़ा पुअर शॉट मार रहे, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट हमें करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इस पे सोचेंगे, काम करेंगे इस पे, क्योंकि काफी मैचेस आगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है, और इंशाल्लाह वी ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू कप्तान साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Difficult day for him and his side tonight. they'll have to go back to the drawing board. It's a 40-run win for the Southern Superstars. We're now going to head to a short break and we'll be back after the break with the post-match presentation.
there's a team that is on a roll. It's certainly the Southern Superstars. Another victory, back-to-back victories, and that too by a big margin. Welcome to the post-match presentation. The Legends League Cricket would like to thank all its sponsors. Our title sponsor, K. Rasa, travel experience partner, Ease My Trip, official streaming partner, FanCode, official licensing partner, Blue God Entertainment, our pouring partner, Thumbs Up, and a hospital partner, Chandan Hospital, Haldwani. It's time to introduce the presentation party. It's Mr. Ankur Agarwal, content creator. Thank you so much for joining us, Ankur. And it's time to announce the legend of the match, and that's the award will be handed over by Mr. Ankur Agarwal and goes to Puneet Mehra from the Southern Superstars. A super knock by Puneet. We're expecting that from Munawira. But Puneet comes in. पुनीत से बात करेंगे. पुनीत 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे. वो 2 विकेट लगातार गए थे. क्या बातचीत हो रही थी मुनावीरा से? बातचीत ऐसी कुछ नहीं हुई थी. बस उन्हें था कि थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं तो रन बन सकते हैं. तो और जैसे उन्होंने बैटिंग करी और प्रेशर मेरे पे नहीं आने दिया तो मेरे को टाइम मिला वहां पे सेट होने का. इसी वजह से रन बन पाए. और आपकी इनिंग की अगर बात करें, आप दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे थे लगातार आप बड़े शॉट्स अटैक नहीं कर रहे थे. वो 1-1 2-2 का खेल भी आप लगातार कर रहे थे. हमने बस यही सोचा था कि सिंगल डबल चलते रहेंगे तो गेम रुकेगा नहीं. और साथ ही साथ हमें लूज डिलीवरी मिली थी बीच में तो हमने उसको ग्रैब किया और बाउंड्री में कन्वर्ट किया और इसी वजह से रन बन पाए. तो आप क्या डिसाइड कर रहे थे किसी ओवर या किसी गेंदबाज के खिलाफ कि यहाँ पे हम आक्रमण करेंगे, या जैसी गेंदबाजी हो रही थी वैसा आप डिसीजन ले रहे थे? हम गेम के अकॉर्डिंग चल रहे थे. बॉलर हमने ऐसा कोई टारगेट नहीं किया था क्योंकि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन हमें हमेशा अगर विकेट पे रहता है तो टफ रहता है बॉलरों के लिए. तो वही हमने सोचा हुआ था. अगर हम जितना खेल पाएंगे उतना अच्छा रहेगा. अच्छा खेल रहा आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Here we go then, Puneet Mehra, legend of the match. Time to speak to another legend. He's the skipper of the Southern Superstars, Hamilton Masakadza. Hamilton must be a happy captain today again. Yeah, very happy today with the way the game went on. The boys really applied themselves well. Bowled really nicely after that good batting effort. So yeah, it's been a great start for the team. Also, as a captain, it must be extremely helpful and courageous for you when you know that your fielders and your wicketkeeper are making sure that there are no errors from them. Yeah, it's been amazing. You don't really expect this level of fielding at Legends Cricket, but the team has been really good in both games. The fielding has really been superb, and yeah, it's basically one big tick that we've had in our changing room. These 2 matches that you've played, 2 convincing victories. How's it happening in the camp? Yeah, I think we've just approached it in a very simple and calm manner. We've just decided to keep it simple as a team, keep it relaxed, just go out and enjoy, and just obviously apply ourselves and show our skill. So it's been really good from the boys. Very confident start to the tournament. It's a pleasure seeing your team perform like this. Thank you so much and all the very best. Cheers. Thanks. There we go then, the champion team, and what a performance by the Southern Superstars. 2 matches, 2 convincing victories for them, and that's a wrap from the post-match presentation. Well, the defending champions are looking very strong. They played 2 and they won 2. They sit pretty up top. The only team on 4 points, and that net run rate very strong as well. The Royal Riders slide down from 2nd to 4th. Remember, the top 4 teams qualify for the playoffs after everyone has played each other once in the league stages. And to continue playing each other tomorrow, match number 8, the India captains in action against the India Tigers. We look forward to welcoming you again tomorrow at 7 o'clock. Sleep well. Vintage Masakadza. Beautiful looking shot. That's the sign of a man in form when he brings up his 50. And that's quite a way to bring up your 50. Phil Mustard, have some of that. What a shot. Big wicket. Gone. Cartwheeling done. 2 wins in a row for the defending champion.
दिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले kumwalika huyo jirani senator wa Laikipia, and when you are done help us to bring His Excellency to talk to us, please. Thank you. Afisa wa usalama wamefanikiwa kumkamata mshukiwa mkuu wa wizi na utekaji nyara Nairobi na viunga soft inside. Ruthless expert rich cream. पसंद भी रहता है, इसलिए उसे नुकसान। चगमगाते दुबई शहर पर ईरान का कहर है। ईरान ने फिर यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हमला किया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के हमले से भारी अफरा-तफरी मच गई। ईरान का बड़ा ड्रोन एयरपोर्ट के पास टैंक से टकराया, इससे जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। दुबई को ईरान बार-बार दुबई को टारगेट कर रहा है। अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है और दुबई की ऊंची इमारतों से लेकर बाजार मॉल में दहशत मचा रहा है। जो दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत और महंगा शहर माना जाता है, दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक और टूरिज्म सेंटर माना जाता है, जहां बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और जिसे देखने हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। दुबई की नाइट लाइफ और लग्जरी शॉपिंग बहुत मशहूर है। यहाँ समंदर किनारे पार्टी और संगीत का काफी चलन। कड़ी सुरक्षा और कम अपराध दर की वजह से ये शहर सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग दुबई में आपको मिल जाएंगे। दुबई में 300 से ज्यादा खास आइलैंड है, जहाँ प्रॉपर्टी बनाना दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियों का सपना होता है। दुनिया भर के 75,000 से ज्यादा करोड़पति, अरबपति दुबई में रहते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि दुबई पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं होगा, कोई विदेशी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने यूएई के कुछ बेस का इस्तेमाल किया ईरान पर हमले के, तो ईरान अपना गुस्सा बार-बार दुबई पर उतार रहा है। दुबई पर हमले
हमले के बहाने वो पूरे मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों को संदेश दे रहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ देना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा साहब इस पर क्या कहते हैं। ईरान के हमले ऐसे चलते रहे तो केवल दुबई नहीं, इस पूरे इलाके का हाल बुरा हो जाएगा, फ्यूचर बुरा हो जाएगा। दुबई तो एक एमिरात है, अरब एमिरेट्स में 7 एमिरात है, आबू धाबी भी है, बाकी छोटे हैं, फुजेरा इत्यादि। इनका फ्यूचर खतरे में है क्योंकि इनकी जो छवि है और इनकी जो पोजीशनिंग है फिलहाल में दुनिया भर के ट्रेड के इंटरसेक्शन में बैठे हैं, दुनिया भर के फाइनेंस के इंटरसेक्शन में, राइट? पैसा है, सॉवरेन फंड्स है, कल को फिर जंग बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, सीधी बिल्डिंग्स में आके ड्रोन्स मिसाइल मारे जाएंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा? सबसे बड़ा खतरा इनको ये हो गया है। पॉइंट इसकी जितनी जल्दी ये जंग खत्म होगी उतना इनको नुकसान कम होगा। ऑलरेडी काफी नुकसान हो गया है फ्यूचर के लिए क्योंकि उनका पॉलिटिकल अभी आज भी अगर जंग रुक जाती है ना तो इनके यहाँ जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही थी वो डिले हो जाएगी। देखिए इस बीच ईरान ने अपनी एक और खतरनाक मिसाइल निकाल ली। वो मिसाइल है सेजल, इसका नाम है सेजल मिसाइल, इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। ईरान ने देखिए इस मिसाइल को फायर किया है। ईरान ने पहली बार इस मिसाइल को इजराइल पर दागा है। ईरान ने देखिए आज अपनी मिसाइल सिटी भी दिखाई। ईरान कह रहा है अभी हमने अपने बहुत कमजोर हथियार दागे, अभी मजबूत हथियार रखे हुए हैं। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है। देखिए जरा ये है सेजल मिसाइल। इसको देखकर ही आपको अंदाजा होगा ये कितनी खतरनाक है। और ईरान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है। जंग में ईरान ने पहली बार ये सेजल मिसाइल दागी और दावा है कि इससे इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर मिसाइल ने टारगेट हिट किया तो भारी तबाही हुई होगी क्योंकि सेजल ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में एक है। वजह है इसे एयर डिफेंस भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता एयर डिफेंस, क्योंकि ये बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। लेकिन सबसे अहम है कि ये दुश्मन को छकाने का काम करती है क्योंकि ये रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। मतलब सेजल मिसाइल नागिन की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। हवा में दिशा बदलने की वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसलिए डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। सेजल मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यानी ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही मचाती है। सेजल मिसाइल की रेंज करीब 2 से 3000 किलोमीटर। ये डीप स्ट्राइक यानी गहरे जख्म देने के लिए जानी जाती है। दावा है ईरान ने अब तक 700 मिसाइल और 3600 ड्रोन दागे, लेकिन IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार ने कहा है कि अभी तो हम पुराने हथियार चला रहे हैं, नए तो निकाले भी नहीं। इब्राहिम जब्बारी ने कहा है हमारे पास नई और एडवांस मिसाइलें भी हैं। और इन मिसाइल हमलों के दरमियान बार बार ये अटकलें लग रही थी कि नेतन्याहू कहाँ है। एक वीडियो कल जारी किया नेतन्याहू ने, आज एक और वीडियो नेतन्याहू का सामने आया जिसमें लोगों के बीच से नेतन्याहू और बातचीत कर रहे थे और इसी बहाने ये भी बताने की कोशिश कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है। טוב, גם לה מגיע קצת. אתה לוחץ? תרים לו גיא. הוא היה זה היה במטוס. מרחב מוגן בשיר. אבל תמיד להיות מרחב מוגן וגם פה שמש. आइए अब आपको सुनवाता हूँ ईरानी कमांडर क्या कुछ कह रहा है। ईरान ने दुश्मन के 200 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। हमने अमेरिका के 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए।
इससे दुश्मन को लगभग $1.5 बिलियन का रोज का नुकसान हो रहा है। हमने 18 जहाजों, तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया और दिखा दिया कि हम हर हमले का जवाब दे सकते हैं और अमेरिका इजराइल को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो जंग में हमला और वार एक तरफ से नहीं हो रहा। इजराइल और अमेरिका के हमले में देखिए ईरान का हाल क्या है। ये ईरान की सड़क है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया बीच सड़क। और इजरायली हमलों के बाद देखिए जरा, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। नुकसान सिर्फ इजराइल का नहीं, ईरान में भी हो रहा है। ये ईरान की एक इमारत की तस्वीर देख रहे हैं। पूरी इमारत तबाह बर्बाद हो गई। और ये जंग इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है। अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर उतार दिए हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर, सारे बॉम्बर उतार दिए। ये B-1 बॉम्बर आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर से भी बम वर्षा कर रहा है ईरान पर। ये आप देख रहे हैं B-52 बॉम्बर भी उतार दिया है अमेरिका ने। देखिए जरा ट्रंप के बॉम्बर कैसे ईरान में तबाही मचा रहे हैं। खासियत देखिए जरा, ये तीनों बॉम्बर। जंग में ट्रंप ने अपने 3 सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान उतारे। 12,000 किलोमीटर दूर से ईरान आ रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। इतनी ताकत है इन बॉम्बर में। अमेरिका के बॉम्बर के सामने ईरान का एयर डिफेंस बौना साबित हो रहा है। ये देखिए पहला बॉम्बर B-52, अमेरिका का पुराना लेकिन सबसे भरोसेमंद बॉम्बर है। ये एक बार में करीब 31,000 किलो बम अपने साथ ले जा सकता है। ये क्रूज मिसाइल, परमाणु हथियार और बम सब छोड़ सकता है। इसकी रेंज 14,000 किलोमीटर यानी बिना रुके ईरान पहुंच सकता है। खार्कीव और ईरान के मिसाइल लॉन्च सेंटर पर इसी ने हमले किए और इतना मजबूत है कि ईरान की कोई मिसाइल इसे गिरा नहीं सकती। ये है B-1 बॉम्बर। अमेरिकी सेना का सबसे तेज रफ्तार वाला बॉम्बर है B-1। उड़ान के दौरान ये पंखों का आकार भी बदल सकता है और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले में माहिर है। ये एक बार में 75,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा सकता है, यानी जमीन के अंदर बंकर में छिपे टारगेट को तबाह कर सकता है। B-1 बॉम्बर ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर खतरनाक हमला किया है। B-1 बॉम्बर की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर और स्पीड 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये B-2 दुनिया का सबसे महंगा और चुपके से हमला करने वाला बॉम्बर है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत 18,000 करोड़ से ज्यादा है। ये रात में बिना आवाज के उड़ता है और सटीक बम गिराता है। सिर्फ B-2 बम वर्षक विमान से बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है, जो बंकर या बुलेट प्रूफ सुरंग तक को उड़ाने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे पहले B-2 बॉम्बर से हमला किया। खमनेई और उनके परिवार पर B-2 बॉम्बर से ही अटैक किया गया था। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी ये दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी क्या कहते हैं। युद्ध का एक आर्थिक पहलू भी होता है और वो पहलू बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही आपको निश्चित करता है कि
ने मास्टर स्ट्रोक खेला है शाहिद ड्रोन का जबरदस्त उपयोग कर। अब ये ड्रोन जो कि 20 से 50,000 यूएस डॉलर पर यूनिट के आते हैं, इनको हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल को पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर में है। अब यहाँ पर आर्थिक पहलू इस तरह सामने आता है कि शाहिद ड्रोन का जबरदस्त यूज करके ईरान, इजराइल और अमेरिका को थका देना चाहता है, उनके एयर डिफेंस को पूरी तरह से सैचुरेट कर देना चाहता है, और ये रणनीति कामयाब होती हुई दिख भी नहीं। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा। इजराइल ने देखिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेबनान में जमीन पर इजरायली सेना उतर चुकी है। दूसरी तरफ देखिए आईडीएफ ने कैसे लेबनान पर अटैक किया है। ये इजरायली सेना का अटैक है। तो अब इजराइल के टारगेट पर लेबनान है, हिजबुल्लाह है, और उनके ठिकानों पर वो अटैक कर रहा है, ऐसा वो दावा कर रहा है। बेरूत में देखिए जरा, बेरूत में अटैक किया है इजराइल ने, और उस हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए। लेबनान के बेरूत में पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। यहाँ इजराइल ने मिसाइल अटैक किया था। और इजराइल ने ईरान पर एक अटैक किया, और यहाँ खड़ा था खमेनी का विमान। ये ईरान का एयरपोर्ट है, बहराबाद एयरपोर्ट। यहाँ खमेनी का विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बहुत खास और अत्याधुनिक विमान था खमेनी का। देखिए जरा, कुछ इस तरह से एयरपोर्ट पर विमान मौजूद था जिस पर अटैक किया गया। इजराइल और खमेनी, इजराइल खमेनी और उनसे जुड़ी चीजों को खत्म कर रहा है। पहले ईरानी सुप्रीम लीडर रहे, खमेनी के सरकारी घर को तबाह किया, और अब उसने खमेनी के प्लेन को भी नष्ट कर दिया है। तेहरान के बहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने हवाई हमला किया, और जिस विमान को खमेनी इस्तेमाल करते थे उसे तबाह कर दिया। दावा है कि खमेनी बोइंग 747 के खास विमान को इस्तेमाल करते थे। खमेनी के इस विमान को आसमान में उड़ता हुआ किला भी कहा जाता है। विमान के अंदर मीटिंग हॉल और खास बेड मौजूद है। खमेनी के विमान में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम भी रहते थे। ऐसा सिस्टम लगा था जिससे मिसाइल या हवाई हमलों का असर न हो। खमेनी के मारे जाने के बाद इजरायली सेना इसका इस्तेमाल करती थी। दावा है कि दूसरे देशों से सहयोग के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करता था। खबर है कि हिजबुल्लाह हूती तक सीधे कनेक्शन का ये बड़ा जरिया था। खमेनी के प्लेन को तबाह करना इजराइल रणनीतिक कामयाबी मान रहा है, और कह रहा है कि हमने ईरानी ताकत की जड़ों को उखाड़ दिया है। इजराइल ने खमेनी के खात्मे के साथ ही ऐलान किया, कहा था ईरान का जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आइए आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा इजरायली कमांडर क्या कहते हैं। प्रतीकात्मक नेता के विमान को गिराया जाना भ्रष्टाचार के युग के अंत का संकेत है। ईरानी जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय ये विमान विश्व भर में उनके आतंकवादी अभियानों को बढ़ावा दे रहा है। इस विमान पर हमला ईरानी आतंकवादी शासन के फिर खड़े होने की क्षमता को कमजोर करने की दिशा में एक और प्रहार है। तो आपको बताऊं, इस असर के बीच मोदी लाए और मुंह से जहाज निकालकर, जब दुनिया के देश तेल और गैस को लेकर परेशान है, और जब मिसाइल एक के पीछे एक दागी जा रही है, ईरान ने अगला फेज, जो अगला चरण है मिसाइल दागने का, वो शुरू कर दिया। दरअसल ईरान अलग अलग फेज
फेज के हिसाब से अलग अलग चरणों में मिसाइल दाग रहा है। बताया जा रहा है ये लगभग 50वां 55वां फेज है, चरण है मिसाइल का। तरफ ईरान मिसाइल दाग रहा है। भारत में एलपीजी और गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ तेल और गैस नहीं आ पा रहा है। भारत में विरोध हो रहा है और हॉर्मुज पर देखिए एक के बाद एक कई शिप मार दिए ईरान ने अब तक। ये वही रास्ता है जहां से तेल के जहाज निकल पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, जिन पर धमाके हो रहे हैं। भारत के जहाज इसी रास्ते से निकल रहे हैं जहां ईरान ने अब तक बहुत से जहाज तबाह कर दिए। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया तेल और गैस को लेकर कि भारत में तेल और गैस की दिक्कत हो रही है। लेकिन इन सारे विरोध प्रदर्शन के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई जब भारत का पहला जहाज तेल का पोर्ट पर पहुंचा। ये शिलोंग जहाज है। सोचिए जब दुनिया के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं तेल और गैस लेकर, भारत का जहाज वहां से निकलकर मुंबई के पोर्ट पहुंचा। ये पहला जहाज था शिलोंग जो पहुंचा। दूसरी तरफ देखिए पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आज गैस सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है विरोध करना, लेकिन उस बीच देखिए अच्छी खबर क्या आई कि भारत का एक और जहाज गैस लेकर हॉर्मुज से निकल कर आया है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शिवालिक जहाज पहुंचा है, गैस लेकर पहुंचा है और ये भारत के लिए अच्छी खबर है। और लाखों सिलेंडर इस जहाज में जो गैस है उससे भरे जा सकेंगे। जंग के बीच जहां गोले दग रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, वहां भारत का जहाज आया है। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव और संजय सिंह एलपीजी सिलेंडर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में। जो काम ट्रंप न कर पाए वो मोदी ने कर दिखाया। बम बारूद के बीच ईरान के समंदर से जहां एक तेल टैंकर निकलना मुश्किल था, वहां मोदी की रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि भारतीय जहाज भी आ रहे हैं और तेल गैस का भारी भंडार भी ला रहे हैं। जो विपक्ष गैस संकट को लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है और सड़क से लेकर संसद तक विरोध और हंगामा कर रहा है, उसे ये मोदी और उनके प्लान का जवाब है। हॉर्मुज से निकलकर आज एक जहाज शिवालिक आया है, 32 लाख सिलेंडर के बराबर गैस लाया है। कल 2 और जहाज आने वाले हैं, यानी जंग के बीच भारत ने आफत को राहत में बदल दिया है। अगर सरकार को ये पता था कि
स्थिति में भी ये राजनीति से बाज नहीं आते हैं। देखिए तो शिवालिक आ गया है पोर्ट पर और गैस लाया है। जब भारत में गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तब जंग के बीच हिंदुस्तान का एक जहाज निकल कर आया। भारतीय कार्गो शिप शिवालिक कतर से गुजरात तट पर आया है। शिवालिक एलपीजी कैरियर है जो भारत की खाड़ी में से रवाना हुआ और आज शाम करीब 5 बजे भारत के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा है, जो अपने साथ लाखों सिलेंडर जितनी गैस मिलाया है। दरअसल इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। अगर इसे किलो में कन्वर्ट करें तो ये 4 करोड़ 60 लाख किलो होगा और हमारे घरों में गैस सिलेंडर तकरीबन 14 किलो का आता है। यानी जहाज पर करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडर के बराबर गैस है, यानी 32 लाख सिलेंडर का काम होगा। अब देखिए नंदा देवी, भारतीयों को राहत देने के लिए नंदा देवी जहाज कल पहुंचने वाला है और शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी भी एलपीजी लेकर आ रहा है। इस जहाज में भी करीब 46,000 टन एलपीजी लदे होने का दावा है। यानी शिवालिक और नंदा देवी की गैस मिला दे तो कुल 65 लाख सिलेंडर जितनी गैस आ गई। भारत में रोजाना करीब 50 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत भी होती है। अब जगलाट की गैस ही नहीं, कच्चा तेल लेकर भी भारत का जहाज जगलाट की आ रहा है। करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। इस जहाज के भी कल गुजरात के मुंद्रा पहुंचने की उम्मीद है और जंग के बीच हॉर्मुज से भारत के जहाज को गाना बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। विरोधियों का काम है आलोचना और निंदा करना, लेकिन इस परेशानी के बीच पूरी दुनिया जब इस युद्ध में घिरी हुई है, उस बीच जहाज का निकल कर आना बड़ी बात है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बहुत गले लग के आए थे ना उसके, जिसके गले कोई लगना नहीं चाहता, उसके गले पड़ के आए थे जाकर। तो आप देखिए नतीजा क्या है आपके सामने। आपकी ना समझी का आपने समझ लिया था कि जो ट्रम्प साहब ने उन्होंने कह दिया 3 दिन में ईरान को उड़ा देंगे, सब खत्म करेंगे और कब्जा हो जाएगा, फिर हम सब राज करेंगे। आजकल जो विपक्ष है ना, वो खाली फेक न्यूज की फैक्ट्री फैलाने में लगा है। मीडिया हो, हमारे देश के लोग हैं, आप सभी निश्चिंत रहें। हमारे पास चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, ये सारा का इतना पर्याप्त भंडार है कि हमारे भारत के किसी व्यक्ति को अगले 60 साल तक भी कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत भारत को नहीं होगी। दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहाँ पहुंच गए हैं। जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहाँ पहुंचोगे आप। लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा। और डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अखिलेश यादव जैसे ये लोग हैं जो पैनिक बुकिंग कराते हैं। अब कांग्रेस वाले नाटक कर रहे हैं कि एलपीजी की कमी है। भाई जब प्रधानमंत्री जी ने, जो ऑयल मिनिस्टर ने कह दिया गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक बुकिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं। कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है और ये जो कमी है ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया में जो आज हालात बने हैं इस युद्ध के बाद, वो होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने तो प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। कुदरत ने पूरा गैस खाली कर देंगे, बचा हुआ देश को देंगे। ठीक है, थैंक यू। लेकिन इस आपदा के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में भी अवसर खोजते हैं। यानी अगर एलपीजी मुश्किल से मिल रहा है तो देखिए क्या खोरी। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर ये सारे सिलेंडर बरामद किए जिन्होंने आपदा में अवसर खोजा था। जमाखोरी भी शुरू हो जाती है कि इन्हीं सिलेंडर को ब्लैक में बेचेंगे, 3,000-4,500 में एक सिलेंडर देंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी अगर परेशान है। अगली तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की देखिए, जम्मू की तस्वीर आप देखिए। जम्मू में भी किसी ने आपदा में अवसर खोजा। ये सारे सिलेंडर देखिए जमाखोरी करके रखी। पुलिस ने रेड की, रेड के बाद ये खजाना मिला है। अब देखिए सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस, देश में गैस संकट को लेकर सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सरकार ने गैस सप्लाई से जुड़े कई नियमों को
बदला। पाइपलाइन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर बड़ा बदलाव किया गया है। पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई, यानी जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शन है उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीएनजी उपभोक्ताओं को पुराने सिलेंडर तुरंत जमा कराने के आदेश। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। सरकार के इस आदेश का मकसद है जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाना। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नियमों को सरकार ने बदल दिया है। शहरी इलाकों के लिए 25 दिनों बाद बुकिंग के आदेश जारी हुए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब सिलेंडर 45 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवरी बंद कर दी गई। सरकार ने गैस सिलेंडर पर ईसीए एक्ट लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य आम लोगों तक जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना है और उनकी कीमतों को नियंत्रित बनाए रखना है। इस ईसीए एक्ट के उल्लंघन पर 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यानी एक्ट लागू होने पर कोई जमाखोरी करे तो 7 साल जेल हो सकती है। साथ ही प्रशासन अवैध रूप से जमा स्टॉक को भी जब्त कर सकता है। तो सरकार लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है, एक्शन भी ले रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सुजाता शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू सीएनजी एंड पीएनजी कस्टमर्स इज मेड। सीएनजी फॉर व्हीकल्स इज मेड। कमर्शियल एलपीजी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है एंड the release orders, the allocation orders have also been issued by them. अब देखिए भारत में कम से कम ये स्थिति नहीं है, पाकिस्तान में देखिए हालात क्या है। पाकिस्तान में यही ब्रेकिंग चल रही है कि सामान लगातार महंगा हो रहा है। सोल से अब आपके लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम उत्पाद के बाद खुदरी घी और तेल भी महंगा 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए। 16 किलो टीन के तेल भी 320 रुपए तक बढ़ गए। चावल घी और तेल के तेल 10 रुपए इजाफे से 600 रुपए हो गए। इसे अब आपके लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम उत्पाद के बाद खुदरी घी और तेल भी महंगा 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए। 16 किलो टीन के तेल भी 320 रुपए तक बढ़ गए। चावल घी और तेल के। अब आपको बताऊं, जहां से किसी का तेल नहीं निकल पा रहा, अमेरिका का तेल नहीं निकल रहा, बाकी दूसरे मुल्कों का नहीं तेल जा पा रहा है, वो जगह से भारत तेल लेकर आया। कौन सी जगह है? पहले मैंने आपको बताया है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। फारस की खाड़ी, कतर से गैस आई है और यहाँ ये जो आप कर्व देख रहे हैं, यही सब कुछ फंसता है। यही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देता। यहाँ से ओमान की खाड़ी होते हुए अरब सागर, मुंबई और गुजरात तक तेल जा रहा है। यही रूट है, यही सारी टेंशन है, यही मिसाइल दागी जा रही है और यही फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज रुके हुए हैं। अब आपको दिखाऊं कहां हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज रुके हुए, ये आप देख रहे हैं, ये है फारस की खाड़ी। दर्जनों जहाज तेल और गैस लेकर अटके हुए हैं यहाँ। इसलिए ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं कि इस जगह से बाकी जहाज भी निकल सके। इसलिए इस समंदर में भी ट्रंप जंग करने को तैयार है। उन्होंने देखिए वॉरशिप्स भेज दिए हैं और अपने मरीन कमांडो भी भेज दिए हैं बाकायदा हॉर्मुज स्ट्रेट के समंदर में। देखिए जरा, ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर एआई वीडियो वायरल है कि ट्रंप मदद मांग रहे हैं नेटो से कि मेरे साथ रुक जाओ। ट्रंप के हाथ में आप एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हॉर्मुज पर मेरी मदद करो, लेकिन कोई नेटो देश मदद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है एआई वीडियो। Come
on, stop. I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broken, hell of a... Why nobody helps me to open Hormuz? देखिए जरा हॉर्मूज पर क्या हो रहा है। ट्रम्प चाह रहे हैं कि इस जगह से उनके जहाज निकल कर जा पाए। दावा है दुनिया के जहाजों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट खोल दिया गया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए जहाजों के लिए इनके हॉर्मूज स्ट्रेट बंद है और उस पर हमला हो रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है, अब्बास अराक्ची बोले हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद कर दिया ताकि सबको ये लगे कि ईरान पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हुआ, केवल अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद है। अराक्ची ने कहा है कि ईरान पड़ोसी या पूरी दुनिया से युद्ध नहीं चाहता है। ये दावा गलत है कि ईरान सबके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गैस निकलता है, लेकिन ईरान की IRGC फोर्स हॉर्मूज स्ट्रेट पर हमलावर है। वहां से गुजरने वाले कई जहाजों को लगातार निशाना बना रही है। इसलिए सोचिए, ट्रंप चाहते हैं कि नाटो देश अमेरिका की मदद करे और हॉर्मूज में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए ये लोग अपने अपने वॉरशिप भी भेज दें यहाँ। ट्रंप ने कहा जो हॉर्मूज से फायदा उठाते हैं वो भी मदद करें, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, ग्रीस ने मना कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा नाटो का भविष्य बदतर हो जाएगा। मुझे लगता है ये नाटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। ब्रिटेन ने कहा हम मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं उतरेंगे। जर्मनी ने भी कहा मिडिल ईस्ट की जंग नाटो की जंग नहीं है, इसलिए हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खुला है। ये केवल हमारे दुश्मनों और हम पर हमला करने वालों के लिए बंद है। दुश्मन और उनके सहयोगी के टैंकर और जहाजों के लिए बंद है। बाकी सभी के लिए आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। जिन देशों का तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरता है, उन्हें इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हॉर्मुज को खोलने के लिए चीन, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी अपने युद्धपोत भेजने चाहिए। अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो ईरान की नाकेबंदी के खिलाफ खुद सख्त कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर चीन के साथ बैठक टाल सकते हैं। अब देखिए जरा ट्रंप नाटो से भी भिड़ रहे हैं। ट्रंप नाटो को कह रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओगे अगर आपने मेरी मदद या इस हालात में मदद नहीं की। तो क्या नाटो से लड़ने की स्थिति में है अमेरिका? दोनों की ताकत देखिए क्या है ताकत। अमेरिका में देखिए जरा, अमेरिका के पास 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं और नाटो के पास संख्या देखिए 21 लाख है। नाटो में 32 देश हैं, उधर अमेरिका है, बाकी के 31 इधर है। रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास 8 लाख है, नाटो के पास 20 लाख। एयरक्राफ्ट 13,000 अमेरिका के पास है और नाटो के 31 देश मिला दे तो होता है 1 लाख। लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है 1790 और नाटो के पास 3,200 से ज्यादा है। हेलीकॉप्टर जिसमें फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी है, अमेरिका के पास 5,737 है और नाटो देशों के पास 5,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है। टैंक्स ट्रंप के पास 4,657 टैंक्स हैं। नाटो से मुकाबला हो तो नाटो के पास 5,000 से ज्यादा टैंक है। बख्तरबंद वाहन अमेरिका के पास 3,91,000 है और नाटो के पास 1 लाख इस तरह के वाहन। रॉकेट लॉन्चर्स अमेरिका के पास 641 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और नाटो के पास 1,500। नौसैनिक बेड़े की बात करें तो अमेरिका के पास 440 नौसैनिक बेड़ा है और नाटो के 31 देशों को जोड़ दें तो उनके पास 600 नौसैनिक बेड़ा है। पनडुब्बी अमेरिका के पास 64 है और नाटो देशों के पास 120 पनडुब्बियां हैं। सबकी पनडुब्बी मिलाकर बस यही बाकी सब मार खा जाते हैं। अमेरिका के पास परमाणु बम 5,400 है और नाटो देशों के पास 515 परमाणु बम है। बहरहाल परमाणु जंग जैसी स्थिति पैदा नहीं हो रही है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी में सहयोग करने के लिए अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम नाटो के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम यूक्रेन मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। इससे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमने उनकी मदद। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हॉर्मुज को खुला रखने जैसे छोटे से प्रयास में हमारी मदद नहीं करता है। ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की योजना पर सहयोगियों के साथ काम कर रहा है,
लेकिन हम व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले हम इस क्षेत्र में अपने लोगों की रक्षा करेंगे, दूसरे अपनी और अपने सहयोगी की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए हम व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए जरा बड़ी चीज, सिचुएशन ये है, हालत ये है कि हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजर रहे। वो रास्ता है जहां सामान भेजा जाता है सऊदी अरब, कतर, यूएई, और यानी माल रुका हुआ है उधर से आने का भी और इधर से जाने का भी। तेल और गैस तो आ रहा है, इसलिए बहुत से कारोबारी और व्यापारी भी परेशान हैं। उनके लिए भारत सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। क्या होगा देखिए जरा। ईरान युद्ध का भारत के निर्यात और आयात पर भी असर पड़ रहा है। कई कारोबारियों का काम ठप होने से बड़ा नुकसान हो रहा है। दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हैं और इसकी वजह से हजारों करोड़ का निर्यात रुका हुआ है, क्योंकि सामान मध्य पूर्व एशिया के देशों में नहीं पहुंच पा रहा, जिसमें सब्जी है, फल है, मीट है जैसे सामान जहाज या बंदरगाह पर खराब हो रहे हैं। संकट के इस दौर में पीएम मोदी सरकार राहत पैकेज लेकर आ रही है और प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत पैकेज का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। राहत पैकेज के इस आर्थिक प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, यानी मंजूरी मिलते ही मिली तो निर्यातकों को मुआवजा मिल सकता है, ताकि माल भेजने वालों के नुकसान को कम किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को फाइनल किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि बंदरगाहों और हवाई माल ढुलाई पर इसका असर पड़ेगा, जिससे मध्य पूर्व के भारत के निर्यात पर थोड़ा असर पड़ेगा। हम कठिन समय में निर्यातकों को सहयोग देने के लिए बैठक करेंगे। 2024-25 में भारत ने खाड़ी देशों को 5.25 लाख करोड़ रुपया का सामान निर्यात किया। अकेले यूपी से करीब 40,000 करोड़ का सामान खाड़ी देशों में जाता है। बंगाल में पीएम मोदी ने कहा था युद्ध से होने वाले असर को हम कम करेंगे। उधर संसद में वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया था। सीतारमण ने कहा कि फंड से मिडिल ईस्ट में जंग जैसी चुनौतियों से निपटेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि उन्हें इल्म है कि इससे भारत के कारोबारियों पर बोझ पड़ रहा है, उसे कैसे कम करना है। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। अब देखिए जरा, इस जंग के बीच पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। और सोचिए वो देश जो ईरान के आसपास है, यानी मिडिल ईस्ट, अरब मुल्क, मुस्लिम देश। देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित दुबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। दुबई, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट का फ्यूल डिपो है जिस पर अटैक हुआ। दूसरी तरफ देखिए, फुजैरा एयरपोर्ट यूएई में है, उस पर अटैक हुआ। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये फुजैरा बंदरगाह है, फुजैरा पोर्ट जिस पर अटैक हुआ है। और यहाँ भी ऑयल डिपो था जिस पर अटैक हुआ है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई है, वो मैं आपको दिखाऊं। ये है सैटेलाइट तस्वीरें, डिपो की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हमले के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब सबसे ज्यादा प्रभावित ईरान के पड़ोसी मुल्क है, यानी अरब देश। देखिए जरा हालात क्या है, क्या क्या रद्द हो गया है और जंग का असर क्या हो रहा है। फॉर्मूला 1 रेस रद्द हो गई। जंग के कारण फॉर्मूला 1 की रेस को कैंसिल कर दिया गया है। बहरीन और सऊदी अरब में ये रेस अप्रैल में होने वाली थी। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ये फैसला किया गया है।
ये रेस 12 अप्रैल और सऊदी में 19 अप्रैल को थी। फॉर्मूला 1 ने बयान में कहा है कि कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन तय हुआ है कि इनकी जगह कोई दूसरी रेस नहीं रखी जाएगी। अगली तरफ देखिए, बाइक रेस भी टाल दी गई। जंग के चलते कतर में होने वाली बाइक रेस कैंसिल हो गई है। फिलहाल तनाव की वजह से बाइक रेस कतर ग्रां प्री को टाल दिया गया है। मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी ने बताया है कि अप्रैल में होने वाली रेस अब 8 नवंबर को कराई जाएगी। ये रेस लुसैल इंटरनेशनल सर्किट में 10 से 12 अप्रैल को होनी थी और इसमें दुनिया के टॉप बाइक रेसर मोटरसाइकिल रेस करते हैं। ग्रां प्री यानी किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय रेस मुकाबले का एक राउंड है। मोटो जीपी सीजन में कई रेस होती हैं, उन्हीं में एक कतर ग्रां प्री भी। इसके अलावा सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट में 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जंग के चलते कहा है कि 16 मार्च से 10 अप्रैल तक होने वाली सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। ये फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और पढ़ने वाले सीबीएसई छात्रों पर लागू होगा, भारत में नहीं लागू होगा। बोर्ड ने बताया कि जिन परीक्षाओं को पहले स्थगित किया वो भी रद्द है। इससे पहले कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। अब आपको सुनाऊं, सुनिए जरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या कह रहे हैं। यूएस ने जानबूझकर रूस और यूरोप को इस झगड़े में घसीटा। इस मायने में उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उन्होंने हमारे और यूरोप के बीच दरार डाल दी। अब वो पैसे का बोझ यूरोपीय लोगों पर डाल रहे हैं और आज के यूरोपीय नेता रीढ़ विहीन है। कमजोर इरादों वाली पीढ़ी उनका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में वे यूएस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन झेल रहा है इन हमलों का? ये जो अरब मुल्क है, सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाला है यूएई और उसमें भी दुबई, क्योंकि दुबई में यूएई में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं ईरान के अब तक। दुबई इस तरह का शहर है जो टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए हमेशा चर्चा में रहता है और लोगों की पसंद भी रहता है, इसलिए उसे नुकसान। जगमगाते दुबई शहर पर ईरान का कहर है। ईरान ने फिर यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हमला किया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के हमले से भारी अफरा तफरी मच गई। ईरान का विस्फोटक से भरा ड्रोन एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक से टकराया। इससे जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। जिस दुबई को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ घंटों उड़ानें थमी रही। इजराइल अमेरिका से जंग में ईरान बार बार दुबई को टारगेट कर रहा है। अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है और दुबई की ऊंची इमारतों से लेकर बाजार मॉल में दहशत मचा रहा है। जो दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत और महंगा शहर माना जाता है, दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक और टूरिज्म सेंटर माना जाता है, जहाँ बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और जिसे देखने हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। दुबई की नाइट लाइफ और लग्जरी शॉपिंग बहुत मशहूर है। यहाँ समंदर किनारे पार्टी और संगीत का काफी चलन है। कड़ी सुरक्षा और कम अपराध दर की वजह से ये शहर सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग दुबई में आपको मिल जाएंगे। दुबई में 300 से ज्यादा खास आइलैंड है, जहाँ प्रॉपर्टी बनाना दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों का सपना होता है। दुनिया भर के 75,000 से ज्यादा करोड़पति, अरबपति दुबई में रहते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि दुबई पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं होगा, कोई विदेशी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने यूएई के कुछ बेस का इस्तेमाल किया ईरान पर हमले की, तो ईरान अपना गुस्सा बार बार दुबई पर उतार रहा है। दुबई पर हमले के बहाने वो पूरे मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों को संदेश दे रहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ देना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा साहब इस पर क्या कहते हैं। ईरान के हमले ऐसे चलते रहे तो केवल दुबई नहीं, इस पूरे इलाके का हाल बुरा हो जाएगा, फ्यूचर बुरा हो जाएगा। दुबई तो एक अमीरात है, अरब एमिरेट्स में 7 अमीरात है, आबू धाबी भी है, बाकी छोटे हैं, मुझे इत्यादि। इनका फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि इनकी जो छवि है और इनकी जो पोजीशनिंग है फिलहाल में दुनिया भर के ट्रेड के
सेक्शन में बैठे हैं, दुनिया भर की फाइनेंस के इंटरसेक्शन में, राइट? पैसा है, सॉवरेन फंड्स है, कल को फिर जंग बढ़ती है, सीधी बिल्डिंग्स ला के ड्रोन्स मिसाइल मारे जाएंगे, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? सबसे बड़ा खतरा इनको ये हो गया है। पॉइंट इज जितनी जल्दी ये जंग खत्म होगी उतना इनको नुकसान कम होगा। ऑलरेडी काफी नुकसान हो गया फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल अभी आज भी अगर जंग रुक जाती है ना, तो इनके यहाँ जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही थी वो डिले हो जाएंगी। देखिए, इस बीच ईरान ने अपनी एक और खतरनाक मिसाइल निकाल ली। वो मिसाइल है सेजल। इसका नाम है सेजल मिसाइल। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। ईरान ने देखिए इस मिसाइल को फायर किया है। ईरान ने पहली बार इस मिसाइल को इजराइल पर दागा है। ईरान ने देखिए आज अपनी मिसाइल सिटी भी दिखाई। ईरान कह रहा है अभी हमने अपने बहुत कमजोर हथियार दागे, अभी मजबूत हथियार रखे हुए हैं। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है। अब देखिए जरा ये है सेजल मिसाइल। इसको देखकर ही आपको अंदाजा होगा ये कितनी खतरनाक है। और ईरान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है। जंग में ईरान ने पहली बार ये सेजल मिसाइल दागी और दावा है कि इससे इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर मिसाइल ने टारगेट हिट किया तो भारी तबाही हुई होगी, क्योंकि सेजल ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में एक है। बजाय इसे एयर डिफेंस भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता एयर डिफेंस, क्योंकि ये बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। लेकिन सबसे अहम है कि ये दुश्मन को छकाने का काम करती है, क्योंकि ये रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। मतलब सेजल मिसाइल नागिन की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। हवा में दिशा बदलने की वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसलिए डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। सेजल मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यानी ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही मचाती है। सेजल मिसाइल की रेंज करीब 2 से 3000 किलोमीटर। ये डीप स्ट्राइक यानी गहरे जख्म देने के लिए जानी जाती है। दावा ईरान ने अब तक 700 मिसाइल और 3600 ड्रोन दागे हैं। लेकिन IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार ने कहा है कि अभी तो हम पुराने हथियार चला रहे हैं, नए तो निकाले भी नहीं। इब्राहिम जब्बारी ने कहा है हमारे पास नई और एडवांस मिसाइलें भी हैं। और इन मिसाइल हमलों के दरमियान बार बार ये अटकलें लग रही थी कि नेतन्याहू कहाँ है। एक वीडियो कल जारी किया नेतन्याहू ने। आज एक और वीडियो नेतन्याहू का सामने आया जिसमें लोगों के बीच से नेतन्याहू और बातचीत कर रहे थे, और इसी बहाने ये भी बताने की कोशिश कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है। אתה זוכר? קוראים גיא. הוא היה זה היה במטוס. מרחב מוגן בשיר. תמיד להיות ליד מרחב מוגן, וגם פה שמש. טוב, גם לה מגיע קצת. אתה זוכר? קוראים לו גיא. זה היה במטוס. מרחב מוגן בשיר. תמיד להיות ליד מרחב מוגן, וגם פה שמש. आइए अब आपको सुनवाता हूँ ईरानी कमांडर क्या कुछ कह रहा है। ईरान ने दुश्मन के 200 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। हमने अमेरिका के 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। युद्ध से दुश्मन को लगभग $1.5 बिलियन का रोज का नुकसान हो रहा है। हमने 18 जहाजों, तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया और दिखा दिया कि हम हर हमले का जवाब दे सकते हैं और अमेरिका इसराइल को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो जंग में हमला और वार एक तरफ से नहीं हो रहा। इजराइल और अमेरिका के हमले में देखिए ईरान का हाल क्या है। ये ईरान की सड़क है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया बीच सड़क।
तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। नुकसान सिर्फ इजराइल का नहीं, ईरान में भी हो रहा है। ये ईरान की एक इमारत की तस्वीर देख रहे हैं, पूरी इमारत तबाह बर्बाद हो गई। और ये जंग इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है, अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर उतार दिए हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर, सारे बॉम्बर उतार दिए। ये B-1 बॉम्बर आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं B-2 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर से भी बम वर्षा कर रहा है ईरान पर। ये आप देख रहे हैं B-52 बॉम्बर भी उतार दिया है अमेरिका ने। देखिए जरा ट्रंप के बॉम्बर कैसे ईरान में तबाही मचा रहे हैं। खासियत देखिए जरा, ये तीनों बॉम्बर। जंग में ट्रंप ने अपने 3 सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान उतारे। 12,000 किलोमीटर दूर से ईरान आ रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। इतनी ताकत है इन बॉम्बर। अमेरिका के बॉम्बर के सामने ईरान का एयर डिफेंस बौना साबित हो रहा है। ये देखिए पहला बॉम्बर B-52, अमेरिका का पुराना लेकिन सबसे भरोसेमंद बॉम्बर है। ये एक बार में करीब 31,000 किलो बम अपने साथ ले जा सकता है। ये क्रूज मिसाइल, परमाणु हथियार और बम सब छोड़ सकता है। इसकी रेंज 14,000 किलोमीटर, यानी बिना रुके ईरान पहुंच सकता है। खार्कीव और ईरान के मिसाइल लॉन्च सेंटर पर इसी ने हमले किए और इतना मजबूत है कि ईरान की कोई मिसाइल इसे गिरा नहीं सकती। ये है B-1 बॉम्बर, अमेरिकी सेना का सबसे तेज रफ्तार वाला बॉम्बर है B-1। उड़ान के दौरान ये पंखों का आकार भी बदल सकता है और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले में माहिर है। ये एक बार में 75,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा सकता है, यानी जमीन के अंदर बंकर में छिपे टारगेट को तबाह कर सकता है। B-1 बॉम्बर ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर खतरनाक हमला किया है। B-1 बॉम्बर की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर और स्पीड 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये B-2 दुनिया का सबसे महंगा और चुपके से हमला करने वाला बॉम्बर है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत 18,000 करोड़ से ज्यादा है। ये रात में बिना आवाज के उड़ता है और सटीक बम गिराता है। सिर्फ B-2 बम वर्षक विमान से बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है, जो बंकर या बुलेट प्रूफ सुरंग तक को उड़ाने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे पहले B-2 बॉम्बर से हमला किया। खमनेई और उनके परिवार पर B-2 बॉम्बर से ही अटैक किया गया था। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी ये दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी क्या कहते हैं। युद्ध का एक आर्थिक पहलू भी होता है और वो पहलू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही आपको निश्चित करता है कि आप युद्ध किस तरह से लड़ पाएंगे और कितनी देर तक लड़ पाएंगे। ईरान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, शाहिद ड्रोन का जबरदस्त उपयोग है। अब ये ड्रोन जो कि 20 से 50,000 US डॉलर पर यूनिट के आते हैं, इनको हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल को पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर बैठती है। अब यहाँ पर आर्थिक पहलू इस तरह सामने आता है कि शाहिद ड्रोन का जबरदस्त यूज करके ईरान इजराइल और अमेरिका को थका देना चाहता है, उनके एयर डिफेंस को पूरी तरह से सैचुरेट कर देना चाहता है और ये रणनीति कामयाब होती हुई दिख भी रही। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा। इजराइल ने देखिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेबनान में जमीन पर इजरायली सेना उतर चुकी है।
देखिए आईडीएफ ने कैसे लेबनान पर अटैक किया है। ये इजरायली सेना का अटैक है। तो अब इजराइल के टारगेट पर लेबनान है, हिजबुल्ला है और उनके ठिकानों पर वो अटैक कर रहा है, ऐसा वो दावा कर रहा है। बेरूत में देखिए जरा, बेरूत में अटैक किया है इजराइल ने और उस हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए। लेबनान के बेरूत में पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। यहाँ इजराइल ने मिसाइल अटैक किया। और इजराइल ने ईरान पर एक अटैक किया और यहाँ खड़ा था खमनेई का विमान। ये ईरान का एयरपोर्ट है, मेहराबाद एयरपोर्ट। यहाँ खमनेई का विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बहुत खास और अत्याधुनिक विमान था खमनेई का। देखिए जरा, कुछ इस तरह से एयरपोर्ट पर विमान मौजूद था जिस पर अटैक किया गया। इजराइल और खमनेई, इजराइल खमनेई और उनसे जुड़ी चीजों को खत्म कर रहा है। पहले ईरानी सुप्रीम लीडर रहे, खमनेई के सरकारी घर को तबाह किया और अब उसने खमनेई के प्लेन को भी नष्ट कर दिया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने हवाई हमला किया और जिस विमान को खमनेई इस्तेमाल करते थे उसे तबाह कर दिया। दावा है कि खमनेई बोइंग 747 के खास विमान को इस्तेमाल करते थे। खमनेई के इस विमान को आसमान में उड़ता हुआ किला भी कहा जाता है। विमान के अंदर मीटिंग हॉल और खास बेड मौजूद है। खमनेई के विमान में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम भी रहते थे। ऐसा सिस्टम लगा था जिससे मिसाइल या हवाई हमलों का असर ना हो। खमनेई के मारे जाने के बाद इजरायली सेना इसका इस्तेमाल करती थी। दावा है कि दूसरे देशों से सहयोग के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करता था। खबर है कि हिजबुल्ला हूती तक सीधे कनेक्शन का ये बड़ा जरिया था। खमनेई के प्लेन को तबाह करना इजराइल रणनीतिक कामयाबी मान रहा है और कह रहा है कि हमने ईरानी ताकत की जड़ों को उखाड़ दिया है। इजराइल ने खमनेई के खात्मे के साथ ही ऐलान किया, कहा था ईरान का जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आइए आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा इजरायली कमांडर क्या कह रहे हैं। प्रतीकात्मक नेता के विमान को गिराया जाना भ्रष्टाचार के युग के अंत का संकेत है। ईरानी जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय ये विमान विश्व भर में उनके आतंकवादी अभियानों को बढ़ावा दे रहा है। इस विमान पर हमला ईरानी आतंकवादी शासन के फिर खड़े होने की क्षमता को कमजोर करने की दिशा में एक और प्रहार है। तो आपको बताऊं, इस असर के बीच मोदी लाए हैं और मुंह से जहाज निकालकर। जब दुनिया के देश तेल और गैस को लेकर परेशान हैं और जब मिसाइल एक के पीछे एक दागी जा रही है, ईरान ने अगला फेज, जो अगला चरण है मिसाइल दागने का, वो शुरू कर दिया। दरअसल ईरान अलग अलग फेज के हिसाब से अलग अलग चरणों में मिसाइल दाग रहा है। बताया जा रहा है ये लगभग 50वां 55वां फेज है, चरण है मिसाइल का। इस तरफ ईरान मिसाइल दाग रहा है। भारत में एलपीजी और गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ तेल और गैस नहीं आ पा रहा है। भारत में विरोध
अब तक। ये वही रास्ता है जहां से तेल के जहाज निकल पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, जिन पर धमाके हो रहे हैं। भारत के जहाज इसी रास्ते से निकल रहे हैं जहां ईरान ने अब तक बहुत से जहाज तबाह कर दिए। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया तेल और गैस को लेकर कि भारत में तेल और गैस की दिक्कत हो रही है। लेकिन इन सारे विरोध प्रदर्शन के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई जब भारत का पहला जहाज तेल का पोर्ट पर पहुंचा। ये शिलोंग जहाज है। सोचिए, जब दुनिया के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं तेल और गैस लेकर, भारत का जहाज वहां से निकलकर मुंबई के पोर्ट पहुंचा। ये पहला जहाज था शिलोंग जो पहुंचा। दूसरी तरफ देखिए, पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी आज गैस सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है विरोध करना, लेकिन उस बीच देखिए अच्छी खबर क्या आई कि भारत का एक और जहाज गैस लेकर हॉर्मुज से निकल कर आया है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शिवालिक जहाज पहुंचा है, गैस लेकर पहुंचा है, और ये भारत के लिए अच्छी खबर है। और लाखों सिलेंडर इस जहाज में जो गैस है उससे भरे जा सकेंगे। जंग के बीच जहां गोले दग रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, वहां भारत का जहाज आया है। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव और संजय सिंह एलपीजी सिलेंडर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट। जो काम ट्रंप न कर पाए वो मोदी ने कर दिखाया। बम बारूद के बीच ईरान के समंदर से जहां एक तेल टैंकर निकलना मुश्किल था, वहां मोदी की रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि भारतीय जहाज भी आ रहे हैं और तेल गैस का भारी भंडार भी ला रहे हैं। जो विपक्ष गैस संकट को लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है और सड़क से लेकर संसद तक विरोध और हंगामा कर रहा है, उसे ये मोदी और उनके प्लान का जवाब है। हॉर्मुज से निकलकर आज एक जहाज शिवालिक आया है, 32 लाख सिलेंडर के बराबर गैस लाया है। कल 2 और जहाज आने वाले हैं, यानी जंग के बीच भारत ने आफत को राहत में बदल दिया है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये राजनीति से बाज नहीं आते हैं। देखिए जरा, शिवालिक आ गया है पोर्ट पर और गैस लाया है। जब भारत में गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तब जंग के बीच हिंदुस्तान का एक जहाज निकल कर आया है। भारतीय कार्गो शिप शिवालिक कतर से गुजरात तट पर आया है। शिवालिक एलपीजी कैरियर है जो फारस की खाड़ी में से रवाना हुआ और आज शाम करीब 5 बजे भारत के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा है, जो अपने साथ लाखों सिलेंडर जितनी गैस भी लाया है। दरअसल इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। अगर इसे किलो में कन्वर्ट करें तो ये 4 करोड़ 60 लाख किलो होगा। और हमारे घरों में गैस सिलेंडर तकरीबन 14 किलो का आता है, यानी जहाज पर करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडर के बराबर गैस है, यानी 32 लाख सिलेंडर का काम हो गया।
अब देखिए नंदा देवी, भारतीयों को राहत देने के लिए नंदा देवी जहाज कल पहुंचने वाला है और शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी भी एलपीजी लेकर आ रहा है। इस जहाज में भी करीब 46,000 टन एलपीजी लदे होने का दावा है, यानी शिवालिक और नंदा देवी की गैस मिला दे तो कुल 65 लाख सिलेंडर जितनी गैस आ गई। भारत में रोजाना करीब 50 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत भी होती है। अब जगलाटकी गैस ही नहीं, कच्चा तेल लेकर भी भारत का जहाज जगलाटकी आ रहा है। करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। इस जहाज के भी कल गुजरात के मुंद्रा पहुंचने की उम्मीद है और जंग के बीच हॉर्मुज से भारत के जहाज को कहना बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। विरोधियों का काम है आलोचना और निंदा करना, लेकिन इस परेशानी के बीच पूरी दुनिया जब इस युद्ध में घिरी हुई है, उस बीच जहाज का निकल कर आना बड़ी बात है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बहुत गले लग के आए थे ना उसके, जिसके गले कोई लगना नहीं चाहता, उसके गले पड़ के आए थे जाकर। तो आप देखिए नतीजा क्या है आपके साथ। आपकी ना समझी का आपने समझ लिया था कि ट्रम्प साहब ने उन्हें कह दिया 3 दिन में ईरान को उड़ा देंगे और सब खत्म करेंगे और कब्जा हो जाएगा, फिर हम सब राज करेंगे। आजकल जो विपक्ष है ना, वो खाली फेक न्यूज की फैक्ट्री फैलाने में लगा है। मीडिया हो, हमारे देश के लोग हैं, आप सभी निश्चिंत रहें। हमारे पास चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, ये सारा का इतना पर्याप्त भंडार है कि हमारे भारत के किसी व्यक्ति को अगले 60 साल तक भी कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत भारत को नहीं हो। दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहाँ पहुँच गए हैं। जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहाँ पहुँचोगे आप। लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा। और डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अखिलेश यादव जैसे ये लोग हैं जो खाली बुकिंग कराते हैं। अब कांग्रेस वाले नाटक कर रहे हैं कि एलपीजी की कमी है। भाई जब प्रधानमंत्री जी ने, जो ऑयल मिनिस्टर ने कह दिया गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक बुकिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है। ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है और ये जो कमी है ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया में जो आज हालात बने हैं इस युद्ध के बाद, वो होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने तो प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। गुजरात में पूरा गैस खाली कर देंगे, बचा हुआ देश को देंगे। ठीक है, थैंक यू। लेकिन इस आपदा के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में भी अवसर खोजते हैं। यानी अगर एलपीजी मुश्किल से मिल रहा है तो देखिए क्या कर रहे हैं। खोरी दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर ये सारे सिलेंडर बरामद किए जिन्होंने आपदा में अवसर खोजा। जमाखोरी भी शुरू हो जाती है कि इन्हीं सिलेंडर को ब्लैक में बेचेंगे, 3,000-4,500 में एक सिलेंडर देंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी अगर परेशान है। अगली तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की देखिए, जम्मू की तस्वीर आप देखिए। जम्मू में भी किसी ने आपदा में अवसर खोजा। ये सारे सिलेंडर देखिए जमाखोरी करके रखी। और पुलिस ने रेड की, रेड के बाद ये खजाना मिला है। अब देखिए सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस, देश में गैस संकट को लेकर सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सरकार ने गैस सप्लाई से जुड़े कई नियमों को बदला। पाइपलाइन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर बड़ा बदलाव किया गया है। पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई, यानी जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शन है उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीएनजी उपभोक्ताओं को पुराने सिलेंडर तुरंत जमा कराने के आदेश। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। सरकार के इस आदेश का मकसद है जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाना। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नियमों को सरकार ने बदल दिया। शहरी इलाकों के लिए 25 दिनों बाद बुकिंग के आदेश जारी हुए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब सिलेंडर 45 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवरी बंद कर दी गई। सरकार ने गैस सिलेंडर पर ईसीए एक्ट लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य आम लोगों तक जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना है और उनकी कीमतों को नियंत्रित बनाए रखना है। इस ईसीए एक्ट के उल्लंघन पर 7 साल की
प्रावधान है, यानी एक्ट लागू होने पर कोई जमाखोरी करे तो 7 साल जेल हो सकती है। साथ ही प्रशासन अवैध रूप से जमा स्टॉक को भी जब्त कर सकता है। तो सरकार लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है, एक्शन भी ले रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सुजाता शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% supplied to CNG and PNG customers is made. CNG for vehicles is made. Commercial LPG के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने कमर्शियल LPG का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है एंड the release orders, the allocation orders have also been issued by them. अब देखिए भारत में कम से कम ये स्थिति नहीं है, पाकिस्तान में देखिए हालात क्या है। पाकिस्तान में यही ब्रेकिंग चल रही है कि सामान लगातार महंगा हो रहा है। थोड़ी से अब आपके लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोलियम मसवाद के बाद खुदरी घी और तेल की महंगा 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए। के तेल भी 320 रुपए तक बढ़ गए। चावल घी और तेल के तेल 10 रुपए इजाफे से 600 रुपए हो गए। इसे अब आपके लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोलियम मसवाद के बाद खुदरी घी और तेल की महंगा 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए। 16 किलो टीन के तेल भी 320 रुपए तक बढ़ गए। चावल घी और तेल के अब आपको बताऊं, जहां से किसी का तेल नहीं निकल पा रहा, अमेरिका का तेल नहीं निकल रहा, बाकी दूसरे मुल्कों का नहीं तेल जा पा रहा है, वो जगह से भारत तेल लेकर आया। कौन सी जगह है? पहले मैंने आपको बताया है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, कतर से गैस आई है और यहाँ ये जो आप कर्व देख रहे हैं, यही सब कुछ फंसता है, यही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देता। यहाँ से ओमान की खाड़ी होते हुए अरब सागर, मुंबई और गुजरात तक तेल जा रहा है। यही रूट है, यही सारी टेंशन है, यही मिसाइल दागी जा रही है और यही फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज रुके हुए हैं। अब आपको दिखाऊं कहां हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज रुके हुए, ये आप देख रहे हैं, ये है फारस की खाड़ी। दर्जनों जहाज तेल और गैस लेकर अटके हुए हैं यहाँ पर। इसलिए ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं कि इस जगह से बाकी जहाज भी निकल सके, इसलिए इस समंदर में भी ट्रंप जंग करने को तैयार है। उन्होंने देखिए वॉरशिप्स भेज दिए हैं और अपने मरीन कमांडो भी भेज दिए हैं बाकायदा हॉर्मुज स्ट्रेट के समंदर में। तरफ देखिए जरा, ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर एआई वीडियो वायरल है कि ट्रंप मदद मांग रहे हैं नेटो से कि मेरे साथ रुक जाओ। ट्रंप के हाथ में आप एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हॉर्मुज पर मेरी मदद करो, लेकिन कोई नेटो देश मदद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है एआई वीडियो। Come on, stop. I know how it feel to wake up, fucked up. Why nobody helps me to open Hormuz? देखिए जरा हॉर्मुज पर क्या हो रहा है। ट्रंप चाह रहे हैं कि इस जगह से उनके जहाज निकल कर पाए। दावा है दुनिया के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए जहाजों के लिए इनके हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और उस पर हमला हो रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है, अब्बास अराक्ची बोले हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है, ताकि सबको ये लगे कि ईरान पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो केवल अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बंद है। अराक्ची ने कहा है कि ईरान पड़ोसी पूरी दुनिया से युद्ध नहीं चाहता है,
ये दावा गलत है कि ईरान सबके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गैस निकलता है, लेकिन ईरान की IRGC फोर्स हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमलावर है। वहां से गुजरने वाले कई जहाजों को लगातार निशाना बना रही है। इसलिए सोचिए, ट्रंप चाहते हैं कि नाटो देश अमेरिका की मदद करे और हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देने के लिए ये लोग अपने अपने वॉरशिप भी भेज दें यहाँ। ट्रंप ने कहा जो हॉर्मुज से फायदा उठाते हैं वो भी मदद करें, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, ग्रीस ने मना कर दिया। जिसके बाद ट्रंप ने कहा नाटो का भविष्य बदतर हो जाएगा। मुझे लगता है ये नाटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। ब्रिटेन ने कहा हम मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं उतरेंगे। जर्मनी ने भी कहा मिडिल ईस्ट की जंग नाटो की जंग नहीं है, इसलिए हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खुला है। ये केवल हमारे दुश्मनों और हम पर हमला करने वालों के लिए बंद है। दुश्मन और उनके सहयोगी के टैंकर और जहाजों के लिए बंद है। बाकी सभी के लिए आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। जिन देशों का तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरता है, उन्हें इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हॉर्मुज को खोलने के लिए चीन, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी अपने युद्धपोत भेजने चाहिए। अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो ईरान की नाकेबंदी के खिलाफ खुद सख्त कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर चीन के साथ बैठक टाल सकते हैं। अब देखिए जरा ट्रंप नाटो से भी भिड़ रहे हैं। ट्रंप नाटो को कह रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओगे अगर आपने मेरी मदद या इस हालात में मदद नहीं की। तो क्या नाटो से लड़ने की स्थिति में है अमेरिका? दोनों की ताकत देखिए क्या है। ताकत अमेरिका में देखिए जरा, अमेरिका के पास 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं और नाटो के पास संख्या देखिए 21 लाख है। नाटो में 32 देश हैं, उधर अमेरिका है, बाकी के 31 इधर है। रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास 8 लाख है, नाटो के पास 20 लाख। एयरक्राफ्ट 13,000 अमेरिका के पास है और नाटो के 31 देश मिला दे तो होता है 1 लाख। लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है 1790 और नाटो के पास 3,200 से ज्यादा है। हेलीकॉप्टर जिसमें फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी है, अमेरिका के पास 5,737 है और नाटो देशों के पास 5,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है। टैंक्स ट्रंप के पास 4,657 टैंक्स हैं। नाटो से मुकाबला हो तो नाटो के पास 5,000 से ज्यादा टैंक है। बख्तरबंद वाहन अमेरिका के पास 3,91,000 है और नाटो के पास 1 लाख इस तरह के वाहन। रॉकेट लॉन्चर्स अमेरिका के पास 641 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और नाटो के पास 1,500। नौसैनिक बेड़े की बात करें तो अमेरिका के पास 440 नौसैनिक बेड़ा है और नाटो के 31 देशों को जोड़ दे तो उनके पास 600 नौसैनिक बेड़ा है। पनडुब्बी अमेरिका के पास 64 है और नाटो देशों के पास 120 पनडुब्बियां हैं। सबकी पनडुब्बी मिलाकर बस यही, बाकी सब मार खा जाते हैं। अमेरिका के पास परमाणु बम 5,400 है और नाटो देशों के पास 515 परमाणु बम है। बहरहाल परमाणु जंग जैसी स्थिति पैदा नहीं हो रही है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी में सहयोग करने के लिए अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम नाटो के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम यूक्रेन मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। इससे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमने उनकी मदद की। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हॉर्मुज को खुला रखने जैसे छोटे से प्रयास में हमारी मदद नहीं करता है। ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की योजना पर सहयोगियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन हम व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले हम इस क्षेत्र में अपने लोगों की रक्षा करेंगे, दूसरे अपनी और अपने सहयोगी की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए हम व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए जरा बड़ी चीज, सिचुएशन ये है, हालत ये है कि हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजर रहे। वो रास्ता है जहां सामान भेजा जाता है सऊदी अरब, कतर, यूएई और यानी माल रुका हुआ है उधर से आने का भी और इधर से जाने का भी। तेल और गैस तो आ रहा है, इसलिए बहुत से कारोबारी और व्यापारी भी परेशान हैं। उनके लिए भारत सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। क्या होगा देखिए तो। ईरान युद्ध का भारत के निर्यात और आयात पर भी असर पड़ रहा है। कई कारोबारियों का काम ठप होने से बड़ा नुकसान हो रहा है। दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हैं और इसकी वजह से हजारों करोड़ का निर्यात रुका हुआ, क्योंकि सामान मध्य पूर्व एशिया
एशिया के देशों में नहीं पहुंच पा रहा, जिसमें सब्जी है, फल है, मीट है, ऐसे सामान जहाज या बंदरगाह पर खराब हो रहे हैं। संकट के इस दौर में पीएम मोदी सरकार राहत पैकेज लेकर आ रही है और प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत पैकेज का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। राहत पैकेज के इस आर्थिक प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, यानी मंजूरी मिलते ही मिली तो निर्यातकों को मुआवजा मिल सकता है, ताकि माल भेजने वालों के नुकसान को कम किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि जल्दी इस प्रस्ताव को फाइनल किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि बंदरगाहों और हवाई माल ढुलाई पर इसका असर पड़ेगा, जिससे मध्य पूर्व के भारत के निर्यात पर थोड़ा असर पड़ेगा। हम कठिन समय में निर्यातकों को सहयोग देने के लिए बैठक करेंगे। 2024-25 में भारत ने खाड़ी देशों को 5.25 लाख करोड़ रुपया का सामान निर्यात किया। अकेले यूपी से करीब 40,000 करोड़ का सामान खाड़ी देशों में जाता है। बंगाल में पीएम मोदी ने कहा था युद्ध से होने वाले असर को हम कम करेंगे। उधर संसद में वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया था। सीतारमण ने कहा कि फंड से मिडिल ईस्ट में जंग जैसी चुनौतियों से निपटेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान कि उन्हें इल्म है कि इससे भारत के कारोबारियों पर बोझ पड़ रहा है, उसे कैसे कम करना है। युद्ध से जो स्थितियां बनी, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। अब देखिए जरा इस जंग के बीच पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। और सोचिए वो देश जो ईरान के आसपास है, यानी मिडिल ईस्ट, अरब मुल्क, मुस्लिम देश। देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित दुबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। दुबई, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट का फ्यूल डिपो है जिस पर अटैक हुआ है। दूसरी तरफ देखिए फुजैरा एयरपोर्ट यूएई में है, उस पर अटैक हुआ है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये फुजैरा बंदरगाह है, फुजैरा पोर्ट जिस पर अटैक हुआ है, और यहाँ भी ऑयल डिपो था जिस पर अटैक हुआ है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई है, वो मैं आपको दिखाऊं। ये है सैटेलाइट तस्वीरें, डिपो की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हमले के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब सबसे ज्यादा प्रभावित ईरान के पड़ोसी मुल्क है, यानी अरब देश। देखिए जरा हालात क्या है, क्या क्या रद्द हो गया है और जंग का असर क्या हो रहा है। फॉर्मूला 1 रेस रद्द हो गई। जंग के कारण फॉर्मूला 1 की रेस को कैंसिल कर दिया गया है। बहरीन और सऊदी अरब में ये रेस अप्रैल में होने वाली थी। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बहरीन में ये रेस 12 अप्रैल और सऊदी में 19 अप्रैल को थी। फॉर्मूला 1 ने बयान में कहा है कि कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन तय हुआ है कि इनकी जगह कोई दूसरी रेस नहीं रखी जाएगी। अगली तरफ देखिए, बाइक रेस भी टाल दी गई। जंग के चलते कतर में होने वाली बाइक रेस कैंसिल हो गई है। फिलहाल तनाव की वजह से बाइक रेस कतर ग्रां प्री को टाल दिया गया है। मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी ने बताया है कि अप्रैल में होने वाली रेस अब 8 नवंबर को कराई जाएगी। ये रेस लुसैन इंटरनेशनल सर्किट में 10 से 12 अप्रैल को होनी थी और इसमें दुनिया के टॉप बाइक रेसर मोटरसाइकिल रेस करते हैं। ग्रां प्री यानी किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय रेस मुकाबले का एक राउंड है। मोटो जीपी सीजन में कई रेस होती हैं, उन्हीं में एक कतर ग्रां प्री भी। इसके अलावा सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है।
सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट में 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जंग के चलते कहा है कि 16 मार्च से 10 अप्रैल तक होने वाली सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। ये फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और पढ़ने वाले सीबीएसई छात्रों पर लागू होगा, भारत में नहीं लागू होगा। बोर्ड ने बताया कि जिन परीक्षाओं को पहले स्थगित किया वो भी रद्द है। इससे पहले कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। अब आपको सुनिए जरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या कह रहे हैं। यूएस ने जानबूझकर रूस और यूरोप को इस झगड़े में घसीटा। इस मायने में उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उन्होंने हमारे और यूरोप के बीच दरार डाल दी। अब वो पैसे का बोझ यूरोपीय लोगों पर डाल रहे हैं और आज के यूरोपीय नेता रीढ़ विहीन है। कमजोर इरादों वाली पीढ़ी उनका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में वे यूएस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन झेल रहा है इन हमलों का? ये जो अरब मुल्क है, सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाला है यूएई, और उसमें भी दुबई, क्योंकि दुबई में, यूएई में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं ईरान के अब तक। दुबई इस तरह का शहर है जो टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए हमेशा चर्चा में रहता है और लोगों की पसंद भी रहता है, इसलिए उसे नुकसान। जगमगाते दुबई शहर पर ईरान का कहर है। ईरान ने फिर यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हमला किया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान के हमले से भारी अफरा तफरी मच गई। ईरान का विस्फोटक से भरा ड्रोन एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक से टकराया, इससे जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। जिस दुबई को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ घंटों उड़ानें थमी रही। इजराइल अमेरिका से जंग में ईरान बार बार दुबई को टारगेट कर रहा है। अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है और दुबई की ऊंची इमारतों से लेकर बाजार मॉल में दहशत मचा रहा है। जो दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत और महंगा शहर माना जाता है, दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक और टूरिज्म सेंटर माना जाता है, जहां बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और जिसे देखने हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। दुबई की नाइट लाइफ और लग्जरी शॉपिंग बहुत मशहूर है। यहाँ समंदर किनारे पार्टी और संगीत का काफी चलन। कड़ी सुरक्षा और कम अपराध दर की वजह से ये शहर सैलानियों की पहली पसंद माना जाता है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग दुबई में आपको मिल जाएंगे। दुबई में 300 से ज्यादा खास आइलैंड है, जहाँ प्रॉपर्टी बनाना दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों का सपना होता है। दुनिया भर के 75,000 से ज्यादा करोड़पति, अरबपति दुबई में रहते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि दुबई पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं होगा, कोई विदेशी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने यूएई के कुछ बेस का इस्तेमाल किया ईरान पर हमले के लिए, तो ईरान अपना गुस्सा बार बार दुबई पर उतार रहा है। दुबई पर हमले के बहाने वो पूरे मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों को संदेश दे रहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ देना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा साहब इस पर क्या कहते हैं। ईरान के हमले ऐसे चलते रहे तो केवल दुबई नहीं, इस पूरे इलाके का हाल बुरा हो जाएगा, फ्यूचर बुरा हो जाएगा। दुबई तो एक एमिरात है, अरब एमिरेट्स में 7 एमिरात है, आबू धाबी भी है, बाकी छोटे हैं, इनका फ्यूचर, क्योंकि इनकी जो छवि है और इनकी जो पोजीशनिंग है फिलहाल में दुनिया भर के ट्रेड के इंटरसेक्शन में बैठे हैं, दुनिया भर के फाइनेंस के इंटरसेक्शन में, राइट? पैसा है, सॉवरेन फंड्स है। कल को फिर जब बढ़ती है, सीधे बिल्डिंग्स वाके ड्रोन्स मिसाइल मारे जाएंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा? सबसे बड़ा खतरा इनको हो गया है। और जितनी जल्दी ये जंग खत्म होगी उतना इनको नुकसान कम होगा। ऑलरेडी काफी नुकसान हो गया फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल अभी आज भी जब रुक जाती है ना, तो इनके यहाँ जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही थी कि वो डिले हो जाएंगी। देखिए, इस बीच ईरान ने अपनी एक और खतरनाक मिसाइल निकाल ली। वो मिसाइल है सेजल। इसका नाम है सेजल मिसाइल। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। ईरान ने देखिए इस मिसाइल को फायर किया है। ईरान ने पहली बार इस मिसाइल को इजराइल पर दागा है।
देखिए आज अपनी मिसाइल सिटी भी दिखाई। ईरान कह रहा है अभी हमने अपने बहुत कमजोर हथियार दागे, अभी मजबूत हथियार रखे हुए हैं। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है। देखिए जरा ये है सेजल मिसाइल। इसको देखकर ही आपको अंदाजा होगा ये कितनी खतरनाक है। और ईरान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है। जंग में ईरान ने पहली बार ये सेजल मिसाइल दागी और दावा है कि इससे इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर मिसाइल ने टारगेट हिट किया तो भारी तबाही हुई होगी, क्योंकि सेजल ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में एक है। वजह इसे एयर डिफेंस भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता एयर डिफेंस, क्योंकि ये बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। लेकिन सबसे अहम है कि दुश्मन को छकाने का काम करती है, क्योंकि ये रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। मतलब सेजल मिसाइल नागिन की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। हवा में दिशा बदलने की वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसलिए डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। सेजल मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यानी ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही मचाती है। सेजल मिसाइल की रेंज करीब 2 से 3000 किलोमीटर। ये डीप स्ट्राइक यानी गहरे जख्म देने के लिए जानी जाती है। दावा ईरान ने अब तक 700 मिसाइल और 3600 ड्रोन दागे हैं। लेकिन IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार ने कहा है कि अभी तो हम पुराने हथियार चला रहे हैं, नए तो निकाले भी नहीं। इब्राहिम जब्बारी ने कहा है हमारे पास नई और एडवांस मिसाइलें भी हैं। और इन मिसाइल हमलों के दरमियान बार बार ये अटकलें लग रही थी कि नेतन्याहू कहा है। एक वीडियो कल जारी किया नेतन्याहू ने, आज एक और वीडियो नेतन्याहू का सामने आया जिसमें लोगों के बीच से नेतन्याहू और बातचीत कर रहे थे, और इसी बहाने ये भी बताने की कोशिश कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है। ويبقى أغزابه مطوس ويبقى بشيء تمييز خابريات وخابريات جنبه سمش دو قبل ما جت ويبقى أغزابه مطوس ويخاف بشيء تمييز خابريات وخابريات جنبه سمش आइए अब आपको सुनवाता हूँ ईरानी कमांडर क्या कुछ कह रहा है। ईरान ने दुश्मन के 200 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। हमने अमेरिका के 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। युद्ध से दुश्मन को लगभग $1.5 बिलियन का रोज का नुकसान हो रहा है। हमने 18 जहाजों, तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया और दिखा दिया कि हम हर हमले का जवाब दे सकते हैं और अमेरिका इसराइल को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। जंग में हमला और वार एक तरफ से नहीं हो रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमले में देखिए ईरान का हाल क्या है। ये ईरान की सड़क है, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया बीच सड़क। और इजरायली हमलों के बाद देखिए जरा, ये तेहरान की तस्वीरें हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। नुकसान सिर्फ इजराइल का नहीं, ईरान में भी हो रहा है। ये ईरान की एक इमारत की तस्वीर देख रहे हैं, पूरी इमारत तबाह बर्बाद हो गई। और ये जंग इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है, अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर उतार दिए हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर, सारे बॉम्बर उतार दिए। ये B-1 बॉम्बर आप देख रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं B2 बॉम्बर से भी बम वर्षा कर रहा है ईरान पर। ये आप देख रहे हैं B-52 बॉम्बर भी उतार दिया है अमेरिका ने। देखिए जरा ट्रंप के बॉम्बर कैसे ईरान में तबाही मचा रहे हैं। खासियत देखिए जरा, ये तीनों बॉम्बर। जंग में ट्रंप ने अपने 3 सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान उतारे। 12,000 किलोमीटर दूर से ईरान आ रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। इतनी ताकत है इन बॉम्बर। अमेरिका के बॉम्बर के सामने ईरान का एयर डिफेंस बौना साबित हो रहा है। ये देखिए पहला बॉम्बर B-52 अमेरिका का पुराना लेकिन सबसे भरोसेमंद बॉम्बर है। ये एक बार में करीब 31,000 किलो बम अपने साथ ले जा सकता है। ये क्रूज मिसाइल, परमाणु हथियार और बम सब छोड़ सकता है। इसकी रेंज 14,000 किलोमीटर यानी बिना रुके ईरान पहुंच सकता है। खार्कीव और ईरान के मिसाइल लॉन्च सेंटर पर इसी ने हमले किए और इतना मजबूत है कि ईरान की कोई मिसाइल इसे गिरा नहीं सकती। ये है B-1 बॉम्बर। अमेरिकी सेना का सबसे तेज रफ्तार वाला बॉम्बर है B-1। उड़ान के दौरान ये पंखों का आकार भी बदल सकता है और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले में माहिर है। ये एक बार में 75,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा सकता है, यानी जमीन के अंदर बंकर में छिपे टारगेट को तबाह कर सकता है। B-1 बॉम्बर ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर खतरनाक हमला किया है। B-1 बॉम्बर की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर और स्पीड 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है B-2 दुनिया का सबसे महंगा और चुपके से हमला करने वाला बॉम्बर है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत 18,000 करोड़ से ज्यादा है। ये रात में बिना आवाज के उड़ता है और सटीक बम गिराता है। सिर्फ B-2 बम वर्षक विमान से बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है, जो बंकर या बुलेट प्रूफ सुरंग तक को उड़ाने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे पहले B-2 बॉम्बर से हमला किया। खमनेई और उनके परिवार पर B-2 बॉम्बर से ही अटैक किया गया था। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी ये दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी क्या कहते हैं। युद्ध का एक आर्थिक पहलू भी होता है और वो पहलू बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही आपको निश्चित करता है कि आप युद्ध किस तरह लड़ पाएंगे और कितनी देर तक लड़ पाएंगे। ईरान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है शाहिद ड्रोन का जबरदस्त उपयोग कर। अब ये ड्रोन जो कि 20 से 50,000 US डॉलर पर यूनिट के आते हैं, इनको हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका और इसराइल को पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर में है। अब यहाँ पर आर्थिक पहलू इस तरह सामने आता है कि शाहिद ड्रोन का जबरदस्त यूज करके ईरान इजराइल और अमेरिका को थका देना चाहता है, उनके एयर डिफेंस को पूरी तरह से सैचुरेट कर देना चाहता है और ये रणनीति कामयाब होती हुई दिख भी रही है। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा। इजराइल ने देखिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेबनान में जमीन पर इजरायली सेना उतर चुकी है। दूसरी तरफ देखिए IDF ने कैसे लेबनान पर अटैक किया है। ये इजरायली सेना का अटैक है। तो अब इजराइल के टारगेट पर लेबनान है, हिजबुल्लाह है और उनके ठिकानों पर वो अटैक कर रहा है, ऐसा वो दावा कर रहा है। बेरूत में देखिए जरा, बेरूत में अटैक किया है इजराइल ने और उस हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए। लेबनान के बेरूत में पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। यहाँ इजराइल ने मिसाइल अटैक किया। और इजराइल
यहाँ खड़ा था खमनेई का विमान। ये ईरान का एयरपोर्ट है, मेहराबाद एयरपोर्ट। यहाँ खमनेई का विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बहुत खास और अत्याधुनिक विमान था खमनेई का। देखिए जरा, कुछ इस तरह से एयरपोर्ट पर विमान मौजूद था जिस पर अटैक किया गया। इजराइल और खमनेई, इजराइल खमनेई और उनसे जुड़ी चीजों को खत्म कर रहा है। पहले ईरानी सुप्रीम लीडर रहे, खमनेई के सरकारी घर को तबाह किया और अब उसने खमनेई के प्लेन को भी नष्ट कर दिया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने हवाई हमला किया और जिस विमान को खमनेई इस्तेमाल करते थे उसे तबाह कर दिया। दावा है कि खमनेई बोइंग 747 के खास विमान को इस्तेमाल करते थे। खमनेई के इस विमान को आसमान में उड़ता हुआ किला भी कहा जाता है। विमान के अंदर मीटिंग हॉल और खास बेड मौजूद है। खमनेई के विमान में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम भी रहते थे। ऐसा सिस्टम लगा था जिससे मिसाइल या हवाई हमलों का असर ना हो। खमनेई के मारे जाने के बाद इजरायली सेना इसका इस्तेमाल करती थी। दावा है कि दूसरे देशों से सहयोग के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करता था। खबर है कि हिजबुल्लाह हूती तक सीधे कनेक्शन का ये बड़ा जरिया था। खमनेई के प्लेन को तबाह करना इजराइल रणनीतिक कामयाबी मान रहा है और कह रहा है कि हमने ईरानी ताकत की जड़ों को उखाड़ दिया है। इजराइल ने खमनेई के खात्मे के साथ ही ऐलान किया, कहा था ईरान का जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आइए आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा इजरायली कमांडर क्या कह रहे हैं। प्रतीकात्मक नेता के विमान को गिराया जाना भ्रष्टाचार के युग के अंत का संकेत है। ईरानी जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय ये विमान विश्व भर में उनके आतंकवादी अभियानों को बढ़ावा दे रहा है। इस विमान पर हमला ईरानी आतंकवादी शासन की फिर खड़े होने की क्षमता को कमजोर करने की दिशा में एक और प्रहार है। तो आपको बताऊं, इस असर के बीच मोदी लाए और मुंह से जहाज निकालकर, जब दुनिया के देश तेल और गैस को लेकर परेशान है और जब मिसाइल एक के पीछे एक दागी जा रही है, ईरान ने अगला फेज, जो अगला चरण है मिसाइल दागने का, वो शुरू कर दिया। दरअसल ईरान अलग अलग फेज के हिसाब से अलग अलग चरणों में मिसाइल दाग रहा है। बताया जा रहा है ये लगभग 50वां 55वां फेज है, चरण है मिसाइल का। इस तरफ ईरान मिसाइल दाग रहा है। भारत में एलपीजी और गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ तेल और गैस नहीं आ पा रहा है, भारत में विरोध हो रहा है और हॉर्मुज पर देखिए एक के बाद एक कई शिप मार दिए ईरान ने अब तक। आपको बताऊं, ये वही रास्ता है जहां से तेल के जहाज निकल पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, जिन पर धमाके हो रहे हैं। भारत के जहाज इसी रास्ते से निकल रहे हैं जहां ईरान ने अब तक बहुत से जहाज तबाह कर दिए। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया तेल और गैस को लेकर कि भारत में तेल और गैस की दिक्कत हो रही है।
प्रदर्शन के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई जब भारत का पहला जहाज तेल का पोर्ट पर पहुंचा। ये शिलोंग जहाज है। सोचिए, जब दुनिया के जहाज नहीं निकल पा रहे तेल और गैस लेकर, भारत का जहाज वहां से निकलकर मुंबई के पोर्ट पहुंचा। ये पहला जहाज था शिलोंग जो पहुंचा। दूसरी तरफ देखिए, पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी आज गैस सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है विरोध करना, लेकिन उस बीच देखिए अच्छी खबर क्या आई कि भारत का एक और जहाज गैस लेकर हॉर्मुज से निकल कर आया है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शिवालिक जहाज पहुंचा है, गैस लेकर पहुंचा है और ये भारत के लिए अच्छी खबर है। और लाखों सिलेंडर इस जहाज में जो गैस है उससे भरे जा सकेंगे। जंग के बीच जहां गोले दग रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, वहां भारत का जहाज आया है। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव और संजय सिंह एलपीजी सिलेंडर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट। जो काम ट्रंप न कर पाए वो मोदी ने कर दिखाया। कम बारूद के बीच ईरान के समंदर से जहां एक तेल टैंकर निकलना मुश्किल था, वहां मोदी की रणनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि भारतीय जहाज भी आ रहे हैं और तेल गैस का भारी भंडार भी ला रहे हैं। जो विपक्ष गैस संकट को लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है और सड़क से लेकर संसद तक विरोध और हंगामा कर रहा है, उसे ये मोदी और उनके प्लान का जवाब है। हॉर्मुज से निकलकर आज एक जहाज शिवालिक आया है, 32 लाख सिलेंडर के बराबर गैस लाया है। कल 2 और जहाज आने वाले हैं, यानी जंग के बीच भारत ने आफत को राहत में बदल दिया है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये राजनीति से बाज नहीं आते हैं। देखिए जरा, शिवालिक आ गया है पोर्ट पर और गैस लाया है। जब भारत में गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तब जंग के बीच हिंदुस्तान का एक जहाज निकल कर आया है। भारतीय कार्गो शिप शिवालिक कतर से गुजरात तट पर आया है। शिवालिक एलपीजी कैरियर है जो भारत की खाड़ी में से रवाना हुआ और आज शाम करीब 5 बजे भारत के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा है, जो अपने साथ लाखों सिलेंडर जितनी गैस भी लाया है। दरअसल इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। अगर इसे किलो में कन्वर्ट करें तो ये 4 करोड़ 60 लाख किलो होगा और हमारे घरों में गैस सिलेंडर तकरीबन 14 किलो का आता है, यानी जहाज पर करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडर के बराबर गैस है, यानी 32 लाख सिलेंडर का काम हो गया। अब देखिए नंदा देवी, भारतीयों को राहत देने के लिए नंदा देवी जहाज कल पहुंचने वाला है और शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी भी एलपीजी लेकर आ रहा है। इस जहाज में भी करीब 46,000 टन एलपीजी लदे होने का दावा है, यानी शिवालिक और नंदा देवी की गैस मिला दे तो कुल 65 लाख सिलेंडर जितनी गैस आ गई। भारत में रोजाना करीब 50 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत भी होती है। अब जगलाट की गैस ही नहीं, कच्चा तेल लेकर भी भारत का जहाज जगलाट की आ रहा है। करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। इस जहाज के भी कल गुजरात के मुंद्रा पहुंचने की उम्मीद है और जंग के बीच हॉर्मुज से भारत के जहाज को गाना बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। विरोधियों का काम है आलोचना और निंदा करना, लेकिन इस परेशानी के बीच पूरी दुनिया जब इस युद्ध में घिरी हुई है, उस बीच जहाज का निकल कर आना बड़ी बात है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बहुत गले लग के आए थे ना उसके, जिसके गले कोई लगना नहीं चाहता, उसके गले पड़ के आए थे जाकर। तो आप देखिए नतीजा क्या है आपके सामने। आपकी ना समझी का आपने समझ लिया था कि जो ट्रम्प साहब ने उन्होंने कह दिया 3 दिन में ईरान को उड़ा देंगे, सब खत्म करेंगे और कब्जा हो जाएगा, फिर हम सब राज करेंगे। आज
खाली फेक न्यूज की फैक्ट्री फैलाने में लगा है। मीडिया हो, हमारे देश के लोग हैं, आप सभी निश्चिंत रहें। हमारे पास चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, ये सारा का इतना पर्याप्त भंडार है कि हमारे भारत के किसी व्यक्ति को अगले 60 साल तक भी कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत भारत को नहीं होगी। दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहाँ पहुंच गए हैं। जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहाँ पहुंचोगे आप? लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा। और डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अखिलेश यादव जैसे ही लोग हैं जो पैनिक बुकिंग कराते हैं। अब कांग्रेस वाले नाटक कर रहे हैं कि एलपीजी की कमी है। जब प्रधानमंत्री जी ने, जो ऑयल मिनिस्टर ने कह दिया गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक बुकिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है और ये जो कमी है ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया में जो आज हालात बने हैं इस युद्ध के बाद वो होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने तो प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। गुजरात में पूरा गैस खाली कर देंगे, बचा हुआ देश को देंगे। ठीक है, थैंक यू। लेकिन इस आपदा के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में भी अवसर खोजते हैं। यानी अगर एलपीजी मुश्किल से मिल रहा है तो देखिए क्या खोरी। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर ये सारे सिलेंडर बरामद किए जिन्होंने आपदा में अवसर खोजा। जमाखोरी भी शुरू हो जाती है कि इन्हीं सिलेंडर को ब्लैक में बेचेंगे, 3,000-4,500 में एक सिलेंडर देंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी अगर परेशान है। अगली तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की देखिए, जम्मू की तस्वीर आप देखिए। जम्मू में भी किसी ने आपदा में अवसर खोजा। ये सारे सिलेंडर देखिए जमाखोरी करके रखी। और पुलिस ने रेड की। रेड के बाद ये खजाना मिला है। अब देखिए सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस, देश में गैस संकट को लेकर सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सरकार ने गैस सप्लाई से जुड़े कई नियमों को बदला। पाइपलाइन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर बड़ा बदलाव किया गया है। पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई। यानी जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शन है उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीएनजी उपभोक्ताओं को पुराने सिलेंडर तुरंत जमा कराने के आदेश। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। सरकार के इस आदेश का मकसद है जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाना। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नियमों को सरकार ने बदल दिया है। शहरी इलाकों के लिए 25 दिनों बाद बुकिंग के आदेश जारी हुए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब सिलेंडर 45 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवरी बंद कर दी गई। सरकार ने गैस सिलेंडर पर ईसीए एक्ट लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य आम लोगों तक जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना है और उनकी कीमतों को नियंत्रित बनाए रखना है। इस ईसीए एक्ट के उल्लंघन पर 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यानी एक्ट लागू होने पर कोई जमाखोरी करे तो 7 साल जेल हो सकती है। साथ ही प्रशासन अवैध रूप से जमा स्टॉक को भी जब्त कर सकता है। तो सरकार लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है, एक्शन भी ले रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सुजाता शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% supplied to CNG and PNG customers is made. CNG for vehicles is made. Commercial LPG के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ने कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है एंड the release orders, the allocation orders have also been issued by them. अब देखिए भारत में कम से कम ये स्थिति नहीं है। पाकिस्तान में देखिए हालात क्या है। पाकिस्तान में यही ब्रेकिंग चल रही है कि सामान लगातार महंगा हो रहा है। थोड़ी से अब आपके लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोलियम उत्पाद के
और तेल के अतिरिक्त 10 रुपए इजाफे से 600 रुपए हो गए। इसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद खुरदुरी घी और तेल भी महंगा, 10 से 20 रुपए फी किलो तक सेस बढ़ा दिए। घी की 16 किलो टीन के तेल भी 320 रुपए तक बढ़ गए। चावल घी और तेल के अब आपको बताऊं, जहां से किसी का तेल नहीं निकल पा रहा, अमेरिका का तेल नहीं निकल रहा, बाकी दूसरे मुल्कों का नहीं तेल जा पा रहा है, वो जगह से भारत तेल लेकर आया। कौन सी जगह है? पहले मैंने आपको बताया है, ये है बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपनी मोहम्मद के नाम पर। सरकार का नौकर कोई काम नहीं हो। रुके हुए हैं। अब आपको दिखाऊं कहां हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज रुके हुए, ये आप देख रहे हैं, ये है फारस की खाड़ी। दर्जनों जहाज तेल और गैस लेकर अटके हुए हैं यहाँ पर। इसलिए ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं कि इस जगह से बाकी जहाज भी निकल सके, इसलिए इस समंदर में भी ट्रंप जंग करने को तैयार है। उन्होंने देखिए वॉरशिप्स भेज दिए हैं और अपने मरीन कमांडो भी भेज दिए हैं बाकायदा हॉर्मुज स्ट्रेट के समंदर में। दूसरी तरफ देखिए जरा,